तो सही है। देख व्यू फाइंडर से आके देख। मैंने वैसे भी ज़ेब्रा ऑन कर रखा है। ये देख फुल है, पूरा अपर्चर क्लोज हो गया, अपर्चर ये हो गया, पूरा बंद हो गया। फिल्टर डाल देता हूँ। रोल है। नमस्कार। संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी की ओर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही अभिनंदन करते हैं उन सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे लाइव वेबकास्ट के माध्यम से हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। An autonomous body of Ministry of Culture, Government of India, Sangeet Natak Akademi, since its inception, has been engaged in preservation and promotion of the vast intangible heritage of India's diverse culture, expressed in the forms of music, dance and drama. ये जो 3 दिवसीय संगोष्ठी का यहाँ आयोजन हमने किया है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमने देश भर में बहुत से उत्सवों का, समारोहों का आयोजन किया पूरे देशवासियों ने। और अब जबकि हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, हम ये श्रृंखला जारी रख रहे हैं और संगीत नाटक अकादमी भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये 3 दिवसीय संगोष्ठी प्रस्तुत कर रहा है। बीज ही जीवन का आधार है, उत्पत्ति का प्रथम बिंदु है। भारतीय साहित्य, दर्शन और कला में व्यापक रूप से विद्यमान है बीज और उससे उत्पत्ति का वर्णन। ये प्रक्रिया निरंतर है और इसी प्रक्रिया के कारण जीवन, चिंतन, ज्ञान का विकास होता है, आविर्भाव होता है। India's glorious culture and heritage encompasses multitude of art forms which from their nascency going through different timelines, phases, eras, epochs, societal beliefs, religions, politics, cultural practices, and so on, have continued to evolve, impact, and enrich our lives. Our national seminar, Beeja-the Seed, Nascency, Resonance, and Continuum in Indic cultural practices will explore the journey of various such cultural practices of India. Eminent scholars, thinkers, gurus, field experts hailing from different parts of the country have enlightened us for the last 2 days, and today is the third and the concluding day of our 3-day national seminar. We'd like to tell you that the seminar has been conceived and curated by eminent dancer, scholar Srimati Swapnasundari ji. इससे पहले कि हम आज के अपने पहले वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित करें, आपको बताना चाहते हैं आज के पूरे दिन का विवरण जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे 4 आज पेपर्स प्रस्तुत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स श्री प्रकाश खांडके महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं, श्री शिवशंकर पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश से, श्री वी रमनी तमिलनाडु से हमारे बीच आए हैं और शगुन भूटानी दिल्ली से। इस सभी के साथ ही हम बीज द सीड, अ मल्टी मॉडल कोरियोग्राफिक फीचर जो हम पिछले 2 दिनों से भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका भी आज हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। और विलंब किए हुए बिना मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ और एक संक्षिप्त उनका परिचय देना चाहती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खांडके जी का। An eminent folklorist of the country, Professor Khanke taught at the University of Mumbai from 2004 to 2017, where he also founded Lok Kala Academy, the performing folk art department of the university. सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी आप विश्वविद्यालय के चेयर प्रोफेसर हैं। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, फ्री प्रेस ग्रुप से जुड़े हैं और उपसंपादक इन दोनों जगह रहे हैं। For his contribution to the folk arts and giving it an academic approach, Professor Khanke has been felicitated at the national level many times. He is an Academy Awardee and recently received the Padma Bhushan Komal Kothari Award. आपने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चाइना, अमेरिका, नेपाल जैसे देशों में अनेकों बार अपने शोध पर चर्चा की है।
ICCR के जनरल असेंबली मेंबर हैं, अकादमी के जनरल काउंसिल मेंबर रहे हैं, ICH और अकादमी की फोक एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य रहे हैं. He is in the fellowship panel of CCRT also. आज अपना शोध निबंध जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही विशेष विषय है, इनके लिए बहुत ही प्रिय है और इसी में इन्होंने PhD भी किया है. खंडोबा, इसके विषय में हम सुनते हैं हमारे आज के पहले प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खानके जी से. My subject is hero stones and cult worship in Dakshinapatha with special reference to Khandoba Yallamma Renuka. In Maharashtra, Khandoba, which is the incarnation of Lord Shiva, but it is being called in colloquial language as a Shankara. So it's an incarnation of Shankara. And it is known Martanda Bhairav in Maharashtra, Khandoba in Maharashtra, and Mailar in Karnataka, and Mallanna in Andhra Pradesh, Telangana. Yallamma also, it's situated in Saundati, which is known as a Renuka in Maharashtra, and there is a holy place called it is in Maharashtra in Nanded district of Kinvat Tehsil. So when we are talking about this hero stone and their cult, basically we will find that most of these hero stones and all the local deities, either they are the incarnation of Lord Shiva or they are the incarnation of Shakti, Mother Goddess. So this phenomena you will find all over India. But as far as Dakshinapatha is concerned, we will have to think about the Khandoba cult. Khandoba cult, when we are talking about the Khandoba cult, basically why it is being known as the incarnation of Shiva, because Mani and Malla, both these demons, they have got the boon from Brahmadeva, and just because they have got boon from Brahmadeva, they used to harass the Saptarshis. When they used to harass the Saptarshis, all Saptarshis went to Brahma, Vishnu, Mahesh to give them some Varadana from these demons. So Shankara said that in my this present situation, I cannot destroy those demons, so I will have to take the avatara, the incarnation. And then Shankara has taken the incarnation of Khandoba. In the Jagrana, which is the ritualistic folk play of Maharashtra known for the Khandoba, it is being mentioned that Nandisa Kela Varu, व्याघ्रांबर चर्माची केली भंडारी, विभूतीचा केला भंडार, गंगा होती ती झाली बानुबाई आणि पार्वती होती ती झाली म्हाळसा. वेळूच्या बनामध्ये अभय मंत्र उच्चारून भगवान शंकराने अवतार घेतला आणि त्यावेळी भक्तांनी गर्जना केली, सदानंदाचा येळकोट, सदानंदाचा येळकोट. दॅट वे in Jagrana, at the initial stage, in the prelude, those Vagyas and Murlis, hotaries of Khandoba, they used to proclaim this type of prarthana.
when in the prelude. At one side, in the beginning of Jagrana, you will find in all over India there is a Ganesh Stuti, whether it is ritualistic folk play, devotional folk play, or entertaining folk play, you will find the Ganesh Stuti, either Ganesh Vandana in narration or Ganesh or Ganpati in as a living character. It is being shown on the stage. So in Jagrana there is a Gana. It starts with the Gana, and that Gana is आजिम्या गणन मिला मल्हारी त्या म्हाळसा देवाला, और आधी पुजावे गणाला मग त्या मल्हारी देवाला. First you will have to have the worship of Gana, Ganesha first, and then Mallari. So though the Ganesh, Bhagwan Ganesh, he is a child of Bhagwan Shankara, Ganesh is being worshipped first in all the folk plays. Om Namo Ji Adya, Veda Pratibadya, that is the Vedic stance of the Ganesh. But when we talk about the local deities, Ganesh is different than the Vedic Ganpati. In Vedic Ganpati, Ganesh, there is a Sanskritization of Ganesh through Vedic literature. But in folk literature, folk culture, Ganesh is being portrayed as a Vignakarta. First of all, he is Vignakarta. And just because he is Vignakarta, to avoid that Vigna, you will have to worship Ganesh, because then he will give you boon, and he will give you a safe side in your all deeds, whether it is performance or whether it is any work like marriage or anything in your life. So Ganesh is being worshipped at first stage. So is the case with Jagrana, and even in Gondala of Shakti Devata, Ganesh is being worshipped first stage. After that, in Jagrana, there is a slok called Kailasarana Shivachandra Mauli Phanindra Matha Mukuti Zalali Karunya Sindho Bavadukha Hari Tujavina Shambho Mazakon Tari. Bola Parvati Mahadev Hare Hare. That way they are giving the prayer of Bhagwan Shankara or Bhagwan Shiva at the beginning, and then the Jagran starts. There is a specific instruments in Jagrana called Dimdi, then cymbals, then tuntune, a one-string instrument. It is being played by the Vagyas and Murlis in Jagrana. Murli is known as the female artist in Jagrana, and there is also a mythological story called Murli, just the Murli or Basuri of Bhagwan Sri Krishna. So it is linked up with Murali, whatever called, it is called Murali. So Vagyan and Muralis, they are the votaries of Khandoba, and they are presenting Jagran. One side Jagran is a ritualistic folk form, and at the another side it is a performance. These Vagyas and Muralis, they are at one side, they are the devotees or votaries of Khandoba, one side, and at the another side they are the folk artists. The rituals which is being placed there, it is known as the Ghatastapana at one side, which is known as the Abhimantrit Bhumi, with the cow dung and
cow urine and everything, Gomutra and Gomaya. It is known as the Abhimantrit Bhumi along with that, one side, and at the another side it is also known as the Rangasthala. So, Rangasthala at one side and ritualistic commandment at another side. Then there is also various properties like the turmeric or flowers and even the lamp. This is all the part of the ritual at one side, and another side it is known as the stage property. So why Jagran of Khandoba is known as the ritualistic folk play? Because it has got both the elements, folk plays element and rituals element, and rituals goes with our life right from birth to our death. So this why it has been called as a ritualistic play? Because ritual there is a belief that God ascends on the earth, God ascends at the Rangasthal, He mingled with the people, He mingled with the hotaries like Vage and Murali, and there is a Sankirtan of those gods and goddesses, and again He takes exit. So this is known as the ritualistic folk play. Ritual is backbone of ritualistic folk play, whether it is Gonda, whether it is Jagran, or whether it is Bharan. Any play. You will find in Karnataka there are the Gauravas, and they used to, these Gauravas, they used to worship the Mallari. Even in Telangana you will find the shepherd community and even other communities, they are worshipping this Mallanna. So Mallanna, whether it is Mallanna or Khandoba or Mailar, they all are being worshipped by all the caste and creeds. And there is no discretion in the worship. This is very unique feature of local deities, because there is no discretion. As the deities are from the masses, there is no discretion. When we talk about the Khandoba, Khandoba has got 5 wives. One wife from merchant community, that is Mahalsa. One from shepherd community, that is Banai. One from Phulai Malin, from the gardener community. One from Rambai, from the tailoring community. And one from Bana, from the Muslim community. So all these communities, it's an amalgamation of all the caste, creed, and why local deities are called deities of masses? Because they are called deities of masses because there is no discretion. Even Brahmins are, even all those deities are being worshipped by the Brahmins right up to the downtrodden classes. So, Khandoba, he is not only God, but there is a concept of hero pattern. Khandoba is hero. In one of my friend, Dr. Gunther Sontheimer, who was in Heidelberg University for the religions department, he has written one big volume on Khandoba, which is being published by IGNCA. He said that Khandoba is a god of warriors, shepherds. So he is not only the god of elite class. And there is a sharp divide between the elite and non-elite deities. Why there is a sharp divide? Because sharp division, because when elite people came to know the popularity of local deities,
they have started the Sanskritization of all the local deities. You might be knowing that the Santoshi Mata, basically she is from the Saptamatruka and she is the local deity. And she is being worshipped by all the downtrodden. But when the elite people got an idea that Santoshi Mata is very popular one, then what they have done, they have written Sanskrit scripts of this Santoshi Mata. Not even I am talking about the Santoshi Mata, but even of you can find it in Renuka Mahatmya or Khandoba. Khandoba, it is being seen in the Brahmanda Purana or Sahyadri Vardhana, Jayadri Mahatmya, Martanda Vijay. Such type of volumes, they are being prepared by the affluent worshippers of Khandoba, elite worshippers of Khandoba, but their way of thinking, their particular philosophical genre of that particular local deity is different than their Khandoba or Renuka or Yellamma. Their stand in society is different, because in society, masses, we call it as the Bahujan Samaj, they feel that Khandoba is mingling with us, he is dancing with us, he is playing with us, he is always with us, and there is no any mediator we need in between, and we are not concerned with any Sanskritized scripts of Khandoba, because we have created all the mythological stories, legends of all the local deities and stone heroes by our own, and it goes generation to generation by votaries or the devotees. It goes generation to generation, and there should not be any middleman between us, between God and us, to tell us about the greatness of God. This is a stand of all the local people as far as local deities or the local stone heroes are concerned. When we talk about the mythological stories or legends, mythological stories and folk tales about these local deities and Kshetrapala Devatas like Khandoba, Renuka and Yellamma, these stories, they have got the mythological approach with some mysticism. Just because of the mysticism and just because of the divinity, we get that idea that God is unearthly, He is celestial. But when it turns into, His divinity turns into personification, His divinity turns into humanness, then this mythological story automatically becomes folk tale. And there is a spread of mythological stories and folk tales in society or in history or in culture two ways. The theories are known as theory of diffusion and theory of polygenesis. Theory of diffusion means the stories, they erupts, they explodes, and that explosion of mythological stories, they are known, it is being known as diffusion. And those stories, mythological stories turns into folk tales, they are automatically spread like the butterfly and like the air. So that spread of particular folk tales are known as the theory of polygenesis. So theory of diffusion and theory of polygenesis applies for all the
local deities or stone heroes. Why they have been called as a stone heroes? Because there are several their incarnations by basically the origin is Shakti and Shiva. Khandoba, Masoba, Bhairova, Bhairavnath, Jyotiba, Kal Bhairav, all these known names along with Khandoba, these are all the stone heroes of particular area. They are known as the Kshetrapala Devata. And when we talk about the Yellamma or Renuka, it is also known as the, though it is known as the mother goddess, it is also known as the Kshetrapala Devata. Because, why they are being called as a Kshetrapala Devata? Because they are the guardian, they are the home guardian, and they are the Kshetra guardian. They give us boon, they give us our well-being along with their presence. So they are being called as a Kshetrapala Devata. And in Kshetrapala Devata, this folk culture, Kshetrapala Devata has a very significant role in folk culture, because folk culture believes that Kshetrapala Devata, we are all under the hermitage of Kshetrapala Devata, and Kshetrapala Devata, after Kshetrapala Devata, there are the devotional Devatas like Ram, Krishna, Vithala. Prior to that, there were the ritualistic deities like Khandoba, Biroba, Masoba and Yellamma, Satvai. Yesterday we have seen the Satvai, which was known as the Saptamatruka. So all these deities, either whether it is a god or goddesses, they take care of ourselves. They take care of the society. They take care of our fields. So that is why they are known as the Kshetrapala Devata. Khandoba is known as the Kshetrapala Devata. His Jagrana, ritualistic folk play, it is known as the with ritual, and even it has got the theatrical significance. Just in Sangeet Natak Akademi in Meghdut only, we had staged the Khandoba Cult, which is being researched by me and produced by Indian National Theatre, and when Damu Jhaveri was General Council member of Sangeet Natak Akademi. That time the Khandoba Cult was placed here, presented here by INT, and Rohini Hatangadi was there, who was Malsa, then Shivaji Satam, Vitthal Umap, all those people were there in that folk play called Khandoba Cult. It was ritualistic folk play. It was not mere folk theatre. We used to have the ritual first on the stage, and with the ritual we used to perform that play, that drama called Khandoba Cult. What is that Khandoba Cult? There is a prelude and sequel. In prelude there is a Gana, there is a Shankara Stuti, Gana Shankara Stuti. Afterward there are the assorted padas, Gaudana of Radha and Krishna, and after that in sequel there is a story of Khandoba's marriage, marrying two wives, Malsa and Banai from the shepherd community, Malsa from the merchant community. And shepherd community is Malsa when he is going to marry at Chandanpur. He take the avatar of shepherd, old shepherd, and used to pacify, used to satisfy Banai by some mysteric acts, and again he married with the Banai. So why? One wife from elite class,
that is called Parvati Mahasa. One from non-elite class, that is Banai, shepherd community. So this genre of elite and non-elite in folk culture you will find not only in Dakshinapatha but all over India. And this genre keeps us with some theatrical elements also, in not only in Maharashtra but all over India. You will find the ritualistic folk plays turned into folk theatre. They have got the theatrical element, and just because of theatrical element, like Chandrasekhar Kambar in Karnataka, Girish Karnad, Haivadan, Chandrasekhar Kambar, then Jabbar Patel, Satish Alekar, or even Ratan Thiyamji. All these people, they have used folk genre, folk element in the contemporary theatre. This is a very significant role of folk into contemporary theatre. Now I will sum up with this, that when we are talking about the local deities, you will find that local deities or stone heroes, they are being worshipped in two layers, one layer of divinity and one layer of personification. One layer of divinity which attached to mysticism, the layer of personification or humanness is attached with our day-to-day life. They mingle with us, they play with us, they give boon to us, they take care of our well-beings. So this is the parallel, it goes parallel in society. So Kshetrapala Devata has got great significance as far as our folk culture is concerned. Now I will request the audio video unit to show that little bit DVD. Temple of Jejuri of Khandoba. This is Khandoba. Renuka. Dr. Guntha Sontheimer with traditional Vagya, Shankarrao Dhamdekar. In Banu and Mahasa, they are as their Khandoba's wives, and they have got all the humanness in them because they envy each other. Mahasa envy Banai, Banai envy Mahasa. That envy, they envy each other. That spirit is, it is being personified. When we talk about the divinity, that mysterious act of Khandoba is with the divinity and his आगे चलिए. Then he again Khandoba takes the आगे ले लीजिए, आगे ले avatar लीजिए. of Please forward. This is the Jagrana of Khandoba. Some
भक्ताने आपल्या घरामध्ये सुख समृद्धी डोक्यात डोळ्यात नाकात अरे पण त्यांनी काय होईल बाबा? झोप उडल, काय झालं? काय मस्त तुम्ही दिवट्याची मस्करी सांगितली. अवठ सुपारी, इथं फुल तिथं माळी, तिथं वाघ्या तिथं म्या पहिला पिवळा झेंडा गया देवाचा बाई. म्या पहिला पिवळा झेंडा गया देवाचा बाई. म्या पहिला पिवळा झेंडा गया देवाचा बाई. Please stop, please stop. Now I will tell you, yesterday we were discussing about the dance form. These muralis, which are known as the votaries of Khandoba, they used to have the hand mudras, hasta mudras, like patak hamsasya hasta mudras, and they used to bend themselves. So I have asked Dr. Rohini Bhate, when we were there together for one workshop, I have asked them what is this we can call about that they are bending a little bit. So she told me that it is being known as the Kamala Kalika, lotus leaves. It is just like Kamala Kalika. And when we asked, I have asked Dr. Rohini Bhateji about this mudra. She told me that it is known in Shastra as a gajagras. So elephant is taking sugarcane in his mouth. It is known as the gajagras. So these are the mudras. Though it is, the mudras are in the classical terms, we are yet to find the colloquial terms for the mudras in performing folk arts. हाँ आगे लीजिए. आगे लीजिए. This is the story of Khandoba and Banai marriage. Khandoba takes the avatar of shepherd. चंदनपूर काय चंदन शिवाय चंदनपूर कुंदनपूर हा कुंदनपूर. अरे चंदनपूर म्हणत केली अख्खा वांगाळ. बरं मी काय म्हणतो, मी लय लांबनं मराठवाड्यातनं आलोय. मराठवाड्यात पडला दुष्काळ, गव्हर्नमेंट काही पॅकेज जाहीर करीना. म्हणलं जावा तुमच्या गावात काहीतरी काम धंदा शोधावा. काही काम आहे का? आमच्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रात पॅकेज पोहोचल आता काही दिवसामध्ये. पण बाबा आमच्याकडे आम्ही इकडे रानोमाळ
This is Yellama Joki. आगे लीजिए, आगे लीजिए, आगे लीजिए. This is Yellama Cult. You must have seen the picture of नेसणं म्हणजे Sittamma Joki, एक मुलींना Padmashri देवाला Award. मागून घेऊन नेसून 5 घरं मागायचं, 5 गावं कुंड फिरायचं आणि तिथून येऊन आपल्या घरी येऊन विधी करायचं. काही 4 लोकांना जीवन वाढायचं म्हणजे ती देवदासी झाली. This film from my friend Suresh Chavan. He has prepared film on this documentary on Yellama Joki. आगे लीजिए. आगे लीजिए. त्यानं काय केलं त्यावेळेला पदर काढला, भंडारा टाकला, कुकू लावला. मुली आजपासून तू त्याला माची घोळी झालीस, तुला जे म्हणायला येतंय ते कर. Thank you. I am very thankful to Sangeet Natak Akademi to give me an opportunity to present my paper over here. Thanks once again. Prakashji, in one of the dialogues they mentioned the government, whereas they should have mentioned Sarkar. I am not criticizing. That shows how the modern education or something is corrupting into a traditional practice. Did you notice it? The word Sarkar. Sorry, government. In one of the dialogues. What is your question? Why did they No, my question is, sir, Prakashji, my question is, because I heard that word government in such an ancient folk tradition, whether the new education is influencing them in the performance. What we are thinking, अभिजन लोग जिन्हें कहते हैं वो हम हमेशा ऐसे समझते हैं कि जो मास क्लास है, जो बहुजन वर्ग है, वो अनपढ़ है या अनागर है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको एटिकेट्स नहीं है, या उनका ज्ञान जो है वो एकल है, वो मर्यादित है, वैसा हम समझते. लेकिन आजकल की दुनिया में ये मोबाइल ऐप और वेरियस उसकी वर्जन्स और ये सब लोक कलाकारों को पता है. इतना ही नहीं तो सरकार को गवर्नमेंट कहना या
हमको लोग पूछते हैं कि ये बुढ़ापे में जो मानधन मिलता है वो मानधन का जीआर आया नहीं अब तक। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो वर्ड है वो उनको पता है कि उसको जीआर कहते हैं, तो हम मानते हैं कि वो बेचारे जानते नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें बदलाव आ गया है और वो बदलाव इतना स्वाभाविक, इतना निरंतर और इतना प्रवाही है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम शायद कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है भारत के पूरे लोक कलाकार ये मोबाइल ऐप, उनके अलग अलग वर्जन और उनका इतना अच्छा लाभ उठाते हैं कि कब प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, कंटेंट क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, गांव कितना दूर है, कैसे आना है, सब वो सोशल मीडिया पे बता देते हैं। और इतना ही नहीं, यूट्यूब पे बता देते हैं और यूट्यूब पे उन्होंने जो पेश किया है उसको इतना ट्रिमेंडस ये है, उसकी मांग है कि हमारे महाराष्ट्र के कीर्तनकार है जिनका नाम है निवृत्ति महाराज इंदोरीकर, पूरे महाराष्ट्र पागल कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए। जो यूट्यूब में उनके पूरे कीर्तन जो है वो अपलोड होते हैं। अभी जो वाघ्या मुरली मैंने बताया, वाघ्या मुरली या जोगती, ये सब यूट्यूब पे आ गए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि दे आर इनोसेंट। अकॉर्डिंग टू मी, दो दे आर इनोसेंट बाय वर्च्यू, they are clever with society, they are innocent by virtue। हाँ, उनका मानना है वो भक्त है, वो देवी की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, यह सब ठीक है, उनमें सीधा साधापन है, वो उनमें पावित्र है, सब है। लेकिन बदलते जमाने में उन्होंने यह सब स्वीकार कर लिया है और उनकी पीढ़ियां उनको बताती है ना। अभी एक समझो वाघ्या है तो वो पढ़ता, वो कुछ अनपढ़ है, उन्होंने जो बोला वो स्क्रिप्ट उनके बच्चे ने लिख दिया। अभी लिखते समय गड़बड़ी भी हो जाती है, तो उसने लिखा कि ये बानुबाई को लिखो, बानुबाई अस्तूरी है। उन्होंने कहा, क्या कहा? बानुबाई अस्तूरी है, अस्तूरी माने पत्नी। तो लिखने वाला जो उनका बेटा है वो कहता है ये अस्तूरी वर्ड क्या है? अस्तूरी करके वर्ड नहीं है कोई मराठी में, अस्तूरी नहीं रहेगा, कस्तूरी रहेगा, वो हिरण की रहती है। तो अस्तूरी की बजाय कस्तूरी हो गई। तो ये सब होना ही है। तो हमको अचरज लगता है कि उनको गवर्नमेंट कैसा पता है, उनको जीआर कैसा पता है। अभी किसी ने मुझे कल पूछ दिया कि गवर्नमेंट जो है ये वृद्ध कलाकारों को मानधन देती है, तो एक स्टेट देती है लेकिन सेंटर का भी होता है, तो सेंटर का मानधन का फॉर्म मुझे डाउनलोड करके भेजो। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, ये होना ही है। और अभी क्या हो गया, कल मैडम ने जो प्रोड्यूस किया लाई हरोबा और ये जो भी, तो उन्होंने वो रिचुअल मटका रखा, उसमें फल रखे, ये रखे, सब वो रखे। तो अभी वो ये रिचुअल नहीं है, ये ड्रामेटिक रिचुअल है। क्योंकि जब हम प्रोसिनियम में आते हैं तब रिचुअल नहीं होता, वो ड्रामेटिक रिचुअल हो जाता है। अभी जो खंडोबा से जागरण प्रोड्यूस किया वो रिचुअल प्ले नहीं है, वो ड्रामेटिक रिचुअल प्ले है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक रिचुअल प्ले एंड रिचुअल प्ले। रिचुअलिस्टिक प्ले इज विद द एम्बियंस। घर है, घर के आड़ोस पड़ोस में कुछ जानवर है,
नीम का पेड़ है, रात की हवा है, अंधेरा है, दीप जलता है, ड्यूटी जलती है, ये नई दुल्हन और दूल्हा पूजा के लिए बैठे हैं, जागरण शुरू है, वो रिचुअलिस्टिक प्ले है, रिचुअल प्ले है. लेकिन यहाँ जो है ड्रामेटिक रिचुअल प्ले है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिचुअलिस्टिक प्ले, ड्रामेटिक रिचुअलिस्टिक प्ले एंड फेक प्ले. फेक प्ले किधर होता है? चलो अभी ये अपना प्रजासत्ताक दिन का परेड है, उसमें अपने को एक 5 मिनट में नाच के दिखाना है और 5 मिनट में रिचुअल भी होना चाहिए और डांस भी होना चाहिए. तो ये जो है ये अलग अलग बातें हैं. जब हम लोक की बात करते हैं तो लोक के पर्यावरण के साथ होता है, लोक की संस्कृति के साथ होता है, लोक के अनजानेपन के साथ होता है, निरागसता के साथ होता है. जहाँ सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन आता है, सेंस ऑफ स्किल आता है, सेंस ऑफ ऑडियंस आता है, तब लोक विसर्जित होता है. लोक में लोक और भगत ये मिलजुल जाते हैं, उसमें लाइन नहीं रहती है. अभी जो खंडोबा का जागरण है, वहाँ अगर गांव में अगर किसी मंदिर में ये होता तो जो देखने वाले जो लोग हैं, दर्शक है, जिन्हें हम दर्शक कहते हैं, वो दर्शक नहीं कहते, वो भगत कहते हैं, भक्त कहते हैं. तो वो भक्त आता है, टर्मेरिक फोरहेड पे लगाता है, उनके फोरहेड पे लगाता है, उनके दर्शन लेता है और निकल जाता है. तो दिस इज इन आवर लैंग्वेज व्हाट वी कैन कॉल द टोटल थियरी ऑफ टोटल थिएटर एंड थियरी ऑफ एलिनिएशन ऑफ ब्रेक्ट. सो यह समग्र रंगभूमि का उदाहरण है, लेकिन इससे लोग परे है. तो हम जो अनुसंधान करना है वो लोक का करना है, लोक के लोक देवताओं का करना है, वहाँ के स्टोन हीरोज का करना है. स्टोन हीरोज की जो कहानियाँ होती है वो पूरी माइथोलॉजिकल नहीं होती, वो माइथोलॉजिकल कहानी की लोक कथाएं परिवर्तित होती है. और जो खंडोबा है, खंडोबा हमने क्या कहा कि वो शंकर का अवतार है. उसके फोकटेल जब बनती है तो वो क्या कहते हैं, अरे वो तो बानाई का बिलवेड है. बानाई कौन है? वो शेपर्ड है. तो उसका जो एक ह्यूमननेस है उसकी, या पर्सोनिफिकेशन है, उसकी फोकटेल बनती है आगे. तो माइथोलॉजिकल स्टोरी, फोकटेल्स और आगे फेक टेल्स, ये प्रोसेस है. तो और पॉपुलर फोक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फोक, पॉपुलर फोक. सो ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इनको हमने समझना चाहिए. मैं शुक्रगुजार हूँ कि स्वप्न सुंदरी मैडम, हेलन मैडम और अपने सबसे यहाँ के चेयरमैन जो है संगीत नाटक अकादमी के डॉक्टर संध्या पुरेशा जी, इन सब के मार्गदर्शन से मैं यहाँ मेरा शोध निबंध प्रस्तुत कर सका हूँ. धन्यवाद. Any other question? नमस्ते जी, बहुत धन्यवाद. एक सवाल मेरा है, आपने जो ये खंडोबा का और उनका इलमा का दिखाया, और महाराष्ट्र में एक और सांस्कृतिक संकेत है विठोबा. विठोबा से संबंधित कोई ऐसा ये फोक जॉनरा है क्या? यस, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि विठोबा के संबंधित कोई है, विठोबा ना. तो मैं ये बताना भूल गया कि कानड़ा विठ्ठलू, कानड़ा मल्हारी,
विठ्ठल कर्नाटका का है, खंडोबा कर्नाटका का, विठ्ठल आंध्रा का है, खंडोबा आंध्रा का है। ये दो जॉनर में फर्क है। खंडोबा इज फ्रॉम फोक कल्चर, फोक जॉनर, एंड विठ्ठल इज फ्रॉम डिवोशनल कल्चर. इट इज नॉट फोक कल्चर, इट इज डिफरेंट वैष्णव कल्चर, वैष्णव कल्ट. तो हमारे मराठी में एक पद है, जो पद विठोबा और खंडोबा के साम्य के बारे में बताता है. वो पद मैं गा के सुनाता हूँ आपको. हाँ, भूवैकुंठ पंढरी तशीच जेजुरी असे सांगती हो, संत वर्णिती हो, जिर 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 जी. तेथे टाळ मृदुंग विणा, येथे घन घन घाटी गरजती हो. भक्त जन येती, भक्त जन येती, भक्त जन येती हो. तिथे पुंडलिक सगुण, येथे प्रधान हे गणपती हो. जेजुरा प्रती हो, जिर 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 जी. तिथे पंढरीचा विठोबा, येथे खंडोबा जेजुरा प्रती. भक्तजन येती, स्नान करीती, पूजा करीती हो. भीमा आणि चंद्रभागा, इथे करा गंगा, भक्तजन येती हो. स्नान करीती हो, जिरी जिरी जी 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 जिर जिर जी जी. So this is the difference between Khandoba and So that was a senior and very eminent folklorist, scholar, academician, journalist, Dr. Professor Prakash Khandke ji. I request Shri V.V. Ramani ji to kindly felicitate him on behalf of Sangeet Natak Akademi. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हमारे अगले प्रवक्ता हैं शिवंकर पाठक जी, जो हमारे बीच उत्तर प्रदेश से आए हैं. श्री शिवंकर पाठक ने गुरुकुल पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र वाराणसी में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 7 वर्षों तक कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया. वर्ष 2009 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त शासी संस्था महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा वेद विभूषण की उपाधि आपने प्राप्त की. तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी से वेद विषय में शास्त्री एवं आचार्य तक अध्ययन किया. आपने देश के विभिन्न भागों में वैदिक सम्मेलनों में भाग लिया तथा अनेकानेक संस्थाओं से सम्मान प्राप्त किया. वर्ष 2017 में आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वेद पंडित पुरस्कार से सम्मानित किया गया. मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शिवंकर पाठक जी को. धन्यवाद. मेधा देवी जुषमाणा न आगाद् विश्वाची भद्रासु मनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः. त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया. त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे. मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती.
मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता विस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु वाग्देव्यै नमः। नमो नमः। यहाँ उपस्थित पद्म भूषण नृत्य विदुषी श्रीमती स्वप्नसुंदरी महोदया जी, उपस्थित श्रीमती हेलन आचार्य जी, संगीत नाटक अकादमी की नवनिर्वाचित अध्यक्षा महोदया, देश के विभिन्न प्रांतों से इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पधारे हुए अपने अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान एवं विदुषी तथा अन्य श्रोतागण, दर्शकगण तथा यहाँ से सुदूर बैठे हुए इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे इस कार्यक्रम को और देख रहे लोगों को, उनके भीतर विराजमान विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा प्रणाम। श्रीमती स्वप्नसुंदरी महोदया जी के मार्गदर्शन में एवं परिकल्पना में तथा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त शासित संस्था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित इस बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिदिवसीय बीज नामक संगोष्ठी में मुझे वेद के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया, अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं स्वप्नसुंदरी महोदया जी का और संगीत नाटक अकादमी का दोनों का आभार व्यक्त करता हूं तथा मैं इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूं। आज मेरा जो विषय रहेगा वह तो मुख्य विषय के केंद्र में जो है वह है वेद, किंतु इस व्याख्यान की यात्रा में बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे पड़ावों को हम जो है स्पर्श करते चलेंगे। तो मैं श्रीमान से आप दिखाएं। हाँ, हमारा जो जिन बिंदुओं को हम स्पर्श करेंगे वो इस प्रकार हैं: सृष्टि उत्पत्ति, ध्वनि उत्पत्ति, वेदोत्पत्ति, वैदिक स्वर, वैदिक संगीत, वैदिक छंद, बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तंत्र, मंत्र और यंत्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, नैतिकता, मर्यादा तथा सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म। बीज नामक इस कार्यक्रम में मुझे वेद और बीज विषय पर बात करने के लिए कहा गया है। बीज अपने आप में बहुत सारे संभावनाओं को समेटा होता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जितनी व्यापकता है, प्रकृति को, वृक्षों को, नदियों को, ग्रह नक्षत्रों, तारों को, भाषाओं को, संस्कृतियों को, भाषाओं को, जितनी भी चीजें हैं वह सब कुछ उस एक बीज की ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार जो भी हम इस सृष्टि में देख रहे हैं, सब कुछ जितनी भी प्रकृति है, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं,
इन सब का बीज यदि हमें ढूंढना हो, खोजना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्वप्राचीन जो ग्रंथ है या स्रोत है या ज्ञान राशि है, वह है वेद। वेदों में अनेकों शास्त्रों का, अनेकों ज्ञानों का, कलाओं का आपको बीज मिल सकता है, जैसे कि रस शास्त्र, संगीत शास्त्र, गणित शास्त्र, विमान शास्त्र, नाट्य शास्त्र, छंद शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिल्प शास्त्र, मूर्तिकला, भौतिक विज्ञान, भवन निर्माण, राजनीति शास्त्र, इतिहास शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, प्रबंध शास्त्र इत्यादि। जितनी भी चीजें हैं, सभी का बिंदु अगर आपको बीज अगर ढूंढना हो तो वेद में आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह आती है, इतनी सारी चीजों का बीज वेदों में है, तो भाई वेद कितना पुराना है? वेद का बीज क्या होगा फिर? जब इतनी सारी चीजों का बीज वेद है, तो वेद का बीज क्या होगा? जब वेद के बीज के बारे में बात करते हैं, वेद की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो प्राचीन काल से ऋषियों ने इस पे बहुत ही मंथन किया है और इसमें भी कई मतांतर हैं वेदोत्पत्ति के विषय में। कुछ तो इन्हें कुछ समय के भीतर बांधना चाहते हैं इनकी उत्पत्ति को, किंतु ऋषियों ने, जो पारंपरिक ऋषि हैं जिन्होंने ज्ञान को देखा है, विज्ञान को देखा है, उन्होंने इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा है। और वेदों में जो अंतस्साक्ष्य भी है, जो प्रमाण भी है, वेदों का ही प्रमाण, स्मृतियों का प्रमाण, पुराणों का प्रमाण, उनका प्रमाण यह है कि जो वेद है वह सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हुआ। वेद सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हुआ। आज यह प्रश्न उठता है कि सृष्टि की उत्पत्ति तो लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं इस बात को। आज वेद का जो स्वरूप हमें आज दिखाई दे रहा है, ये उतने पहले समय से आज तक उस रूप में कैसे प्राप्त हो गया हमें? तो इसके विषय में निरुक्त में, जो कि वेद के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग निरुक्त है, उसमें महर्षि यास्क लिखते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने मंत्र को देखा है। वेद की उत्पत्ति के बाद की जाए तो वेद की उत्पत्ति के विषय में जो बात आई कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ वेद की उत्पत्ति हुई, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई और कब तक के लिए हुई? सृष्टि उत्पत्ति के विषय में भी भारत वर्ष के जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहे हैं और पाश्चात्य के जो विद्वान रहे हैं, उन लोगों ने भी गहरा मंथन किया है। किंतु अभी इस विषय में हम भारत के ऋषि महर्षियों और यहाँ के चिंतकों का उनकी बात करेंगे। सृष्टि उत्पत्ति की बात करें तो सृष्टि उत्पत्ति के विषय में वेदों में वर्णन है। ऐसे तो सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सूक्त और मंत्र विद्यमान हैं वेदों में, किंतु सबसे जो प्रसिद्ध सूक्त और मंत्र हैं उनमें से एक है नासदी सूक्त, दूसरा है हिरण्यगर्भ सूक्त, तीसरा है पुरुष सूक्त। ये ऐसे सूक्त हैं जिनमें आपको सृष्टि उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट रूप से आपको वर्णन मिलेगा, स्पष्ट रूप से। और भी ऐसे कितने सूक्त वेदों में विद्यमान हैं जिनमें आपको मिल सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वेदों में वर्णन है। श्रीमती स्वप्नसुंदरी महोदया जी ने 2 दिन हम लोगों को दिखाया कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कैसे बीजोत्पत्ति होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। किंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि उस पर एक बार मैं भी प्रकाश डालूं, क्योंकि यहाँ पे आवश्यक होगा। वेदों में जो नासदीय सूक्त में वर्णन है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में, वह यह है कि सृष्टि के आरंभ में न सत था न असत, न ज्ञान था न अज्ञान, न ग्रह न नक्षत्र न तारे न भाषा न संस्कृति न वायु न दिशाएं, कुछ भी नहीं। सब
अंधकार से ढका हुआ था, जल ही जल था। तब केवल एक वह सृष्टा, उसे आप सृष्टा कहें, परमात्मा कहें, परब्रह्म कहें, क्रिएटर कहें, जो भी कहना है कह सकते हैं। मैं यहाँ पे सृष्टा शब्द उपयोग करूंगा क्योंकि उसने सृष्टि की। केवल वह सृष्टा था, उसकी जो इच्छा हुई कि मुझे एक से बहुत होना है, एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने की जो इच्छा थी, उसी इच्छा का संकल्प उसने किया और उसी संकल्प की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ के रूप में हुई। उस परमात्मा, उस सृष्टा ने हिरण्यगर्भ उत्पन्न किया। हिरण्य अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण की तरह चमकने वाला, दिखने वाला एक गर्भ, बीज, बीज उसने उत्पन्न किया। उसके विषय में हिरण्यगर्भ सूक्त में भी आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ, स्वर्ण की तरह दिखने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ण का पिंड, कुछ लोग कहते हैं सोने का अंडा। सहस्रों वर्ष तक वह जल में स्थित रहा और उसके बाद उस पिंड में एक भयंकर स्पंदन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ और फिर वह फूट पड़ा, दो भागों में फूट पड़ा और उससे एक महान ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे ऋषियों ने कहा ओम, ओंकार। ऋषियों ने उसे ओंकार कहा, प्रथम नाद, प्रथम ध्वनि। जो ओम है उसमें 3 वर्ण है, अ, उ, म। वर्णों में भी जो वर्णों का जो बीज है वह है अकार। अकार ऐसा वर्ण है, ऐसा अक्षर है, ऐसा कोई भी शब्द या अक्षर नहीं जिसमें अकार ना आए। बिना अकार के कोई वर्ण है ही नहीं। तो सबसे पहला जो वर्णों का बीज है वह है अकार, और ध्वनि का जो बीज है वो है ओंकार। तो उसी ओंकार से फिर सृष्टि उत्पत्ति हुई। क्रमशः सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, दिशाएं इत्यादि उत्पन्न हुए। बात सृष्टि उत्पत्ति की इसलिए करनी थी क्योंकि बात नाद के विषय में होनी है। तो हमारा जो प्रथम नाद वहां से उत्पन्न हुआ और उसी से फिर उसी नाद से वेदों का सृजन हुआ। अब ये बात आती है कि सृष्टि उत्पत्ति जब हुई थी, इतने करोड़ों साल, लाखों साल हो चुका है, और वेद जो कि उसी सृष्टि के साथ उत्पन्न हुए, वो हमारे तक कैसे आए? तो ऋषि महर्षियों ने अपने तपोबल से, योग माया से ध्यान पूर्वक बैठकर इस सृष्टि के विषय में चिंतन करते हैं, और जब चिंतन करते हैं तो इस सृष्टि के बारे में उन्हें ज्ञान होता है, मंत्र उन्हें दिखाई देते हैं। आप सोचेंगे मंत्र तो ध्वनि होते हैं, मंत्र दिखाई कैसे देते हैं? तो इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। जब गर्भ में बच्चा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड, साउंड के माध्यम से उसको हम दृश्य में परिवर्तित करते हैं, वो दृश्य में दिखाई देता है। मंत्र दिखाई देते हैं, हृदय में स्फुटित होते हैं मंत्र। ऋषियों को मंत्र स्फुटित हुए अंदर से, सृष्टि का ज्ञान, और उन्होंने उसको जो देखा, उन्होंने जो भी अनुभव किया, अपने शिष्यों को उन्होंने सुनाया, और उन शिष्यों ने फिर उन शिष्यों को, अपने शिष्यों को, फिर अपने शिष्यों से, फिर अपने शिष्यों को, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वह वेद की जो परंपरा है, श्रुति के रूप में हस्तांतरित होती रही। श्रुति इसलिए पढ़ा क्योंकि सुन के ओरल एजुकेशन श्रुति परंपरा के रूप में यहां तक पहुंची है। वेद के बहुत सारे ऋषि और ऋषिकाएं रही हैं, केवल ऋषि नहीं, ऋषिकाएं भी रही हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों को देखा है। बहुत सारे ऋषिकाएं, लोपामुद्रा, ऐसे बहुत, और अनेक। वेद सृष्टि से जब आए थे तो वेद केवल एक ही थे। आज इतिहास में पढ़ाया जाता सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कैसे हो जाएगा?
वेद तो तब एक ही था। वेद व्यास तक, वो जो वेद की परंपरा आई वेद व्यास तक वेद का स्वरूप केवल एक ही था। वेद व्यास ने देखा कालांतर में समय कम होगा, लोगों की स्मृतियां कम होंगी, मेमोरी कम होगी, तो उन्होंने वेद के एक भाग को जो एक ही था उसका 4 विभाजन कर दिया विषयों के आधार पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं चारों वेद की अनेकों शाखाएं भी प्राप्त हुई। शाखाओं, एक जो ऋग्वेद है उनकी 21 शाखाएं, 21 तरह से बोले जाने वाला जो पद्धति, 21 शाखाएं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं थी और अथर्ववेद की 9 शाखाएं। 1131 शाखाएं वेद की हमारे पास प्राप्त थी। ऋषियों ने इन्हें देखा था। प्रश्न उठता है कि ये गई कहां? आज हमारे पास मुश्किल से 10 से 12 शाखाएं केवल प्राप्त हैं। लोग कहते हैं वेद लुप्त हो गया। वेद लुप्त नहीं होता, क्योंकि वेद शब्द है, ध्वनि है, और ध्वनि कभी लुप्त नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रश्न, न्याय दर्शन ने और सारी फिलोसफी ने कहा है कि शब्द लुप्त हो जाते हैं। शब्द कभी लुप्त नहीं होते, इसलिए वेद लुप्त नहीं, तिरोहित हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। और जब फिर से ऋषि महर्षि ध्यान में बैठेंगे, उसका चिंतन करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, खोजेंगे उन्हें, तो उन्हें फिर से मिल जाएगा ज्ञान। वेद ज्ञान है। किसके विषय में ज्ञान? सृष्टि के विषय में ज्ञान, पुरुष के विषय में ज्ञान, स्त्री के विषय में ज्ञान, किसी भी तरह के विषय में ज्ञान कोई व्यक्ति जब फिर से ढूंढेगा उसे फिर से मिल जाएगा। तो वेद लुप्त नहीं होते। बात ध्वनि की हो रही थी कि वेदानाम ध्वनि रेवच, वेद जो है वह ध्वनि प्रधान है, और शब्द कभी लुप्त नहीं होते, इसलिए वेद भी लुप्त कभी नहीं हो सकता। वेद शाश्वत है। इस पे लोगों ने कहा कि वेद जो शब्द है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी ने कुछ बोला, आज 10 साल बाद भी हम सुनते हैं। शब्द कहाँ लुप्त हुए? और विदेश के कुछ वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि वो ऐसी कोई मशीन बनाएंगे कि वायुमंडल में विद्यमान जो ध्वनि है, जिनको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, 15 हर्ट्ज से नीचे सुन नहीं सकते, और जिनको मशीन भी नहीं सुन पा रही है अभी, तो वो ऐसी मशीन बनाएंगे, वायुमंडल में ध्वनि घूम रही है, उनको वो सुन सकेंगे। उन्हीं ध्वनियों को ऋषियों ने सुना है। वही है वेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान। ज्ञान किसके विषय में? ज्ञान इस सृष्टि के विषय में, जितने भी चीजें इसके विषय में ज्ञान। वेद जो है, हमारे पास जो वैदिक साहित्य है वह 4 भागों में विभक्त है, 4 भागों में प्राप्त होता है। पहला तो है संहिता ग्रंथ। संहिता जो साहित्य है वेद का, उसमें मंत्र भाग है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। मंत्र कई विषय के लिए भी होते हैं। कुछ मंत्र यज्ञ के लिए होते हैं, कुछ मंत्र आध्यात्मिक होते हैं, कुछ मंत्र विज्ञान के लिए होते हैं, कुछ मंत्र प्राणायाम के लिए होते हैं। तो संहिता भाग में जो है वह है मंत्र भाग। दूसरा जो साहित्य है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। मंत्र भाग जो है संहिता भाग में है, उन्हीं की जो व्याख्या, एक्सप्लेनेशन है, वह है ब्राह्मण ग्रंथों में। यज्ञों को कैसे करना है, उन मंत्रों को कैसे कहाँ उपयोग करना है, कैसे विनियोग करना है, उसका जो पूरी विधि बताई गई, विधि शास्त्र बोल सकते हैं, वह है ब्राह्मण ग्रंथ, जो दूसरा साहित्य हमें प्राप्त होता है। तीसरा है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का मतलब होता है अरण्य में जिनका उत्पत्ति हुई हो, जिनके विषय में देखा गया। अरण्य मतलब जंगल, क्योंकि यह वानप्रस्थ के समय में पढ़ा जाता है, यह गूढ़ ज्ञान है। अरण्य ग्रंथों में वो जो मंत्र भाग हैं, जो यज्ञ की व्याख्या की गई थी, उन्हीं की दार्शनिक व्याख्या जो है अरण्य ग्रंथों में की गई है। और उसके बाद जो चौथा हमें साहित्य प्राप्त होता है वह है उपनिषद, उसे ही वेदांत भी कहते हैं। उसमें ब्रह्म विद्या के विषय में, जीव के विषय में, आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में एकदम जो गूढ़ ज्ञान है, संन्यास आश्रम में उसको लोग अध्ययन करते हैं। 4 भागों में उसका साहित्य हमें प्राप्त होता है। वेदों में अब बात यह आती है कि वेद जब हम सुनते हैं, आजकल अधिकतर ऐसा लोग विचार करते हैं कि वेदों में क्या होगा। कोई पंडित जी आते हैं,
मंत्र बोलते हैं, पूजा कराते हैं, चले जाते हैं। पता नहीं दुर्भाग्य है या फिर पता नहीं क्या, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी अमूर्त धरोहर निधि है जिसके विषय में हम इतनी छोटी कल्पना करते हैं। जैसा हमने बताया कितने शास्त्र, गणित शास्त्र इत्यादि कितने शास्त्र हमारे उनके बीज मिलते हैं, उसी तरह से जो वेद है ना, उनका मुख्य जो प्रतिपादन है वो है यज्ञ। उनका जो यज्ञ के बारे में वर्णन है, अध्यात्म के विषय में है। वेद जो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, वह भौतिकता को तो उसने महत्व दिया है, किंतु भौतिकता से ऊपर जो है अध्यात्म को महत्व दिया हुआ है, चेतना के स्तर पर। क्योंकि ययाति की कहानी आप लोग सुने होंगे। यमराज जब आते हैं, एक जीवन में उनको संतोष नहीं मिलता सुख से, फिर एक जीवन और मान लेते हैं। फिर उनको बोलते हैं, दोबारा जब यमराज आते हैं बोलते हैं एक जीवन और बस, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, एक जीवन और दे दीजिए। इस तरह करते करते कितने जीवन मांग लिया उन्होंने, उनको इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई। इंद्रिय कभी तृप्त हो नहीं सकती। इसीलिए वेद के जो ऋषि हैं बहुत ही दूर दृष्टा थे, वह जानते थे कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए इंद्रिय सुख के लिए तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप बच्चा जाता है विद्यालय में, आजकल पढ़ता है, पहले तो गुरुकुल जाते थे। फिर उसके बाद वह जब पढ़ाई करके आता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसमें अपने जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति जो है गृहस्थ आश्रम में पूरी तरह से कर लेता है, त्याग पूर्वक करता है। धर्म पहला है, दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम। कामनाओं को भी कैसे पूरा करना है, अपने इच्छाओं को भी धर्म पूर्वक। पहला है धर्म, तो अर्थ भी कमाना है तो धार्मिक अर्थ कमाना है, और कामनाओं को पूर्ण करना है, इंद्रियों को तृप्त भी करना है तो भी धार्मिक काम करना है, अपने इंद्रियों को तृप्त भी करना है, धर्म के मार्ग पर चल के करना है। तो इसलिए ऋषियों ने उसको महत्व तो दिया, लेकिन उससे ज्यादा महत्व दिया अपने आप की खोज के लिए, अपने आप के चिंतन के लिए। तो वेद की जो विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु वह यह है। मंत्र, वेदों में जो मंत्र प्राप्त हैं, उस मंत्र को यदि जो षडंग वेद के 6 अंग हैं, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये सब उनके अनुसार जो बताया गया है, जो विधि बताई गई है, उन मंत्रों को यदि आप वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही उनका उच्चारण करेंगे, तो ही उस मंत्र का जो प्रभाव बताया गया है तभी वह होगा। जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं महामृत्युंजय मंत्र टेप में चल रहा होता है, गायत्री मंत्र टेप में चल रहा है, कॉलर ट्यून चल रहा है, ये वैदिक मंत्र है, इनका प्रभाव नहीं होगा। और ऋषियों ने तो ये भी कह दिया कि नहीं, अगर आप गलत सुनते हैं तो ये गलत ही प्रभाव करेंगे। वेद मंत्र जो हैं वह स्वर प्रधान है, उन पे स्वर लगा हुआ है। आप फर्स्ट स्लाइड दिखाएं, ये देखिए, ये वेद मंत्र है, इन पे स्वर लगा हुआ है। कुछ आप ऊपर देख रहे हैं, कुछ नीचे लाइन देख रहे हैं। वेद मंत्र ऐसे होते हैं। वैदिक मंत्र ये हैं, पौराणिक मंत्र जैसे जटाटवी, गलत, जल प्रवाह, पावित स्थले, वो पौराणिक मंत्र, उनमें ऐसे स्वर नहीं लगे होंगे, वो फिर छंद के अनुसार उनको गाया जाता है। यहाँ स्वर के, यहाँ छंद तो है ही है, किंतु यहाँ स्वर भी हैं। ये जो वैदिक मंत्र है, इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 स्वर प्राप्त होते हैं, और उनको ऐसे ही बोलना है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वह स्वरित है, नीचे जो आप देख रहे हैं वो अनुदात्त है, और जो न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, उदात्त है। इसका मतलब यह है कि इस मंत्र को कैसे बोलना है। जैसे लिखा है, वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर, ऐसे बोलना है। इस वैदिक मंत्र को यदि इस स्वर के साथ यदि आप बोलते हैं, तभी उसका वह प्रभाव होता है जो होना चाहिए। इसी प्रकार से सामवेद में जब हम जाते हैं तो सामवेद
गानात्मक है। संगीत का बीज सामवेद में। आप दिखाएं दूसरा। अब देखिए, ये सामवेद का मंत्र है, ये गान प्रधान है। यहां पे 7 स्वर हो जाते हैं। 3 जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यजुर्वेद के मंत्रों में थे, ऋग्वेद के मंत्रों में थे, अथर्ववेद के मंत्रों में थे, सामवेद में 7 स्वरों पे उन्हीं मंत्र वही होंगे, 7 स्वरों में उनका गायन होगा। फिर वही जो संगीत में 7 स्वर हैं, वही स्वर यहां भी है, किंतु यहां पर जो स्वर हैं वह अक्षरों के माध्यम, संख्या के माध्यम से लिखा हुआ है। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 और र, और कहीं कहीं 2 1 लिखा हुआ है। ये जो 7 स्वर हैं, अगर इनको हम वेणु वाद्य है उस पर यदि हम देखें, सामवेद के जो मंत्र हैं इनको यदि हम वेणु वाद्य पे देखें कि वेणु वाद्य का कौन सा स्वर और वेद के मंत्र का, सामवेद का कौन सा स्वर, तो उसका वर्णन मैं करूंगा। सामवेद का जो पहला स्वर 1 लिखा हुआ है वह वेणु का मध्यम स्वर होगा। सामवेद का जो द्वितीय स्वर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, वह वेणु का गांधार होगा। सामवेद में जो तृतीय स्वर लिखा हुआ है, वेणु में वह ऋषभ होगा। चतुर्थ जहां 4 लिखा हुआ है वहां षड्ज होगा वेणु पर। जहां 5 लिखा हुआ है वेणु पर वह धैवत होगा। और जहां सप्तम स्वर होता है, यहाँ पे 7 नहीं लिखा होता, वहां 2 1 लिखा होता है, वह जो है वेणु का पंचम स्वर होगा। इस तरह से संगीत और यह जो है आप इसकी समानता देख सकते हैं। आप एक मंत्र सुनाएं, वीडियो चलाएं सामवेद का। सात स्वरों का अनुभव कर सकते हैं। तो एक प्रयास किया है मैंने कि संगीत और सामवेद का जो लिंक है आपस में, या कैसे उसके वहाँ बीज प्राप्त होते हैं, उसको प्रदर्शन करने का प्रयास किया मैंने। तो इस तरह से मंत्र का जो उसका मंत्र कैसे बोलना चाहिए, उसका जो नियम है उसके अनुसार आप बोलेंगे तो मंत्र का प्रभाव होगा। उसी तरह से वेदों में छंद भी प्राप्त हैं। वैदिक छंद 7, मुख्य रूप से 7 ही छंद प्राप्त हैं। ऐसे तो बहुत सारे 100 से ज्यादा छंद हो जाते हैं वेद में भी। जो वेद के मुख्य छंद हैं वह है गायत्री छंद, जिसमें 24 वर्ण आता है, 24 अक्षर। उष्णिक छंद, जिसमें 28 अक्षर आते हैं। अनुष्टुप छंद, जिसमें 32 वर्ण। बृहति, जिसमें 36। पंक्ति छंद, जिसमें 40। और त्रिष्टुप छंद, जिसमें 44। और जगती छंद, जिसमें 48। तो आप देखें कि लौकिक साहित्य में और जिस तरह से अभी तक जो हिंदी साहित्य और जो आज हमें प्राप्त होता है छंदों की जो परंपरा, तो इसका बीज वेदों में प्राप्त है। जो लौकिक साहित्य है, लौकिक छंद हैं, और जो वैदिक छंद हैं, उनमें एक भिन्नता है। ऐसे तो भिन्नता बहुत सारी है,
किंतु यहाँ पे जो वेदों में छंद है ये वर्णात्मक है, वर्णों के आधार पर। किंतु लौकिक जो छंद आएंगे तो वहां फिर मात्राओं के आधार पर आ जाते हैं, गुरु लघु इत्यादि को देखते हैं। किंतु वेद में जो गद्य मंत्र हैं, कुछ पद्य मंत्र हैं, कुछ गद्य मंत्र हैं, वो गद्य मंत्र भी जो है छंद में ही आएंगे। ये लौकिक छंद में ऐसा नहीं होगा, गद्य अलग है, पद्य अलग है। पद्य में ही प्रायः जो है ये छंद घटता है, किंतु वेद में ऐसा नहीं है। 100 वर्णों से अधिक जो मंत्र हैं, 100 वर्णों से भी अधिक वाला जो मंत्र है उसको भी पद्य में इन्होंने गिना है, उसका एक नाम दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे छंद, 100 से ज्यादा छंद प्राप्त हो जाते हैं वेदों में। तो ये रही मंत्र की बात, मंत्र के स्वरों की बात, वैदिक संगीत की बात, वैदिक छंद की बात। हर मंत्र का अपना एक ऋषि होते हैं जिन्होंने उस मंत्र को देखा, वो उस मंत्र का ऋषि। वह जो मंत्र जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिस देवता के विषय में कहा जा रहा है, उस मंत्र का वह देवता, और वह मंत्र जिस चीज के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है वह उसका विनियोग। तो एक मंत्र के छंद, देवता, ऋषि, विनियोग होता है। अब ये जो मंत्र हैं, अच्छा मैं एक चीज में जोड़ना चाहता था, नारदीय शिक्षा में पशु पक्षियों के भी विषय में लिखा है कौन कौन से स्वर बोलते हैं एक एक पशु पक्षी। मोर जो है, मोर, उसका जो स्वर है वह है षड्ज। मोर जो है षड्ज में वो बोलता है। गाय ऋषभ बोलती है, बकरी गांधार, क्रौंच पक्षी के विषय में मध्यम, कोयल पंचम, वसंत ऋतु में जब बोलती है पंचम स्वर बोलती है। घोड़ा धैवत बोलता है, धैवत स्वर, और हाथी निषाद। तो इस तरह आप देखें कि एक एक छंद जो है, जैसे हम बात करते हैं शास्त्र, चर्चाएं सुन रहे हैं कि शास्त्र पहले है या फिर लोक पहले है। शास्त्र में संकलन बाद में हुआ, सब कुछ तो प्रकृति से ही लिया गया है। किसी ने उसके बारे में चिंतन किया, मनन किया और उनका संकलन किया। चीजें पहले से ही है। देखिए मोर है और बकरी है, घोड़ा है, पहले से ही स्वर संगीत उनके अंदर है। अब ये जो वैदिक मंत्र हैं, अब बात ये आती है कि वैदिक जो मंत्र हैं, ये मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमने शुरू में ये देखा कि बीज मंत्र के रूप में ओंकार हमें प्राप्त हुआ, और उसी ओंकार की ही अभिव्यक्ति सब पूरा वेद है। किंतु भर्तृहरि कहते हैं वाणी के 4 रूप हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। एक मंत्र जब भीतर होता है, जिसके विषय में आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई विचार आपके अंदर है, आप चिंतन नहीं कर रहे हैं उसका, किंतु जब उसके विषय में बात होगी तब वो अपने आप चिंतन में आ जाएगा। तो जो विषय अंदर में है वो परा है, वो अभी प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, वह अव्यक्त है। किंतु जब विचारों में आएगा तो वह पश्यंती हो जाएगा, पश्यंती हो बन गया। और जब कंठ में आ जाएगा बोलने के लिए तो वह मध्यमा बन जाएगा, वाणी के 4 रूप। और जब कंठ से निकल जाएगा बाहर तो वह वैखरी बन जाएगा। तो ये जो मंत्र हम सुनते हैं, ये वैखरी रूप है मंत्र के। ये तो प्रकट हो चुका है, व्यक्त है, किंतु इस व्यक्त का एक अव्यक्त भी है जिसे हम परा बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी हम मंत्र आज सुन रहे हैं उनका अपना एक बीज है। उस बीज का ही अभिव्यक्ति इतना बड़ा मंत्र है। बीज अंदर है। व्याकरण शास्त्र में एक एक शरीर के भाग से एक एक अक्षरों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। जैसे अ कहां से उत्पन्न होता है? कंठ से। क कंठ से, ख कंठ से, च तालु से, ट मूर्धा। इस तरह से एक एक जो अक्षर वर्ण है शरीर के अलग अलग अंग से और अलग अलग प्रयत्न से, किसको कितने प्रयत्न के साथ बोलना है इसको उसने बताया हुआ है। तो मंत्र जो होता है वो प्रारंभिक रूप में बीज के रूप में होता है अपने भीतर। वही जब अपना मूर्त रूप लेता है, जैसे कि एक कवि होता है, कवि जब कोई रचना कर रहा होता है तो पहले वो अपने हृदय में अर्थ को सोचता है, अर्थ सोचता है, अर्थ यहां सोचता है, उसके बाद अर्थ के बाद उसको शब्द आते हैं।
शब्द उसको प्रस्फुटित होते हैं उसके हृदय में, और फिर वही बात उसकी लेखनी में आ जाती है या वैखरी के रूप में बाहर आ जाती है। किंतु वेद के मंत्र में थोड़ा अलग है, वहां अर्थ पहले नहीं आता, वहां शब्द ही पहले आता है, क्योंकि अर्थ कुछ नहीं होता। भर्तृहरि कह रहे हैं कि जिसको आप मान लीजिए संस्कृत में ये घड़ा है, और घड़े को आप संस्कृत भाषा इसका है घट, और किसी को नहीं पता है घट का अर्थ क्या होता है, तो उसको आप बोल रहे हैं ये घड़ा है, घट नहीं समझ रहा, आप घड़ा बोल रहे हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जो आप अर्थ बता रहे हैं वह भी तो एक शब्द ही है। अर्थ केवल बोधन के लिए, बोध कराने के लिए है, लेकिन वह भी शब्द है, शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो एक जो शब्द होता है वो अपने भीतर होता है एक बीज के रूप में, और एक एक स्थान का एक एक बीज है। जैसे आप योग में भी आप देखेंगे एक एक बीज मंत्रों से एक एक चक्रों को जागृत करने के लिए एक एक बीज मंत्र का प्रैक्टिस किया जाता है। वही बीज मंत्र जब प्रस्फुटित होता है, जब पश्चंती में आता है, हृदय में आता है, और जब कंठ में आता है, मध्यमा बन जाता है, वैखरी के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हम ये जितने मंत्र देख रहे हैं, जितने स्तुतियां सुन रहे हैं, जितने ज्ञान विज्ञान देख रहे हैं, उसी एक बीज मंत्र की ही अभिव्यक्ति है, वैखरी रूप, वैखरी वाणी है। मंत्र मुख्य रूप से देखें तो वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र बोल सकते हैं, पौराणिक मंत्र। विभाजन मैं नहीं कर रहा, उपयोग होता है। भारत में जो साधना पद्धति है उसमें मुख्य रूप से बहुत सारी हैं, किंतु दो, एक निगम और एक आगम। निगम वेद को कहते हैं, आगम तंत्र शास्त्र इत्यादि को। तो वेद तो आप समझ ही गए, वेद में वैदिक जो रिचुअल्स होते हैं उसमें वैदिक मंत्र का उपयोग होता है। बीज मंत्रों का अधिकतर जो है आगम शास्त्रों में उसका वर्णन है, तंत्र में उसका उपयोग होता है। देखिए तंत्र मंत्र यंत्र जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप पहला वाला स्लाइड कर दें। बात ये उठती है कि वेद की बात हो रही है, तंत्र मंत्र और यंत्र की क्या आवश्यकता है आज बात करने की। मैंने प्रयास किया है कि इसमें एक भी ऐसा कोई विषय ना हो जो जीवन से बाहर हो। आज का मेरा व्याख्यान मैंने प्रयास किया है कि टेक्निकल कम हो, दार्शनिक ज्यादा हो, जीवन दर्शन पर आधारित। बातें बहुत हो जाती हैं, जीवन कुछ नहीं हो पाता। तो तंत्र मंत्र और यंत्र के विषय में जो अवधारणा बनी हुई है लोगों के भीतर, और उसका कोई उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसके बारे में प्रचारित ऐसा किया गया है। तो आज जो बीज मंत्र है उनका जो उपयोग होता है वो तंत्र शास्त्र में या तंत्र के विधियों में प्रयोग में ज्यादा होता है। तंत्र की परंपरा यदि थोड़ी सी हम देख लें तो मुख्य रूप से समयाचार और कौलाचार, दो परंपराएं बहुत बड़ी दिखती हैं, जिनके प्रैक्टिशनर, समयाचार के प्रैक्टिशनर जो रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, और कौलाचार्य के अभिनव शैवागम। समयाचार को लोग कहते हैं कि ये वैदिक तंत्र है, वैदिक वेद, क्योंकि वेदों की बात को मानता है, वेद के नियम पर चलता है, ऐसा लोग कहते हैं। और जो कौलाचार है उसे लोग अवैदिक कहते हैं। कौलाचार के भीतर भी 64 परंपराएं हैं। उसे अवैदिक कहने का मतलब बस इतनी सी बात है कि वहां पे जो है क्या होने लग गया, पंचमकार का प्रत्यक्ष प्रयोग करने लग गए वो लोग। पंचमकार मतलब हो गया मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये खुद के लिए ही अंदर इन सब चीजों को करना था, किंतु ये लोग प्रत्यक्ष रूप में इसका प्रैक्टिस करने लग गए, और मांस इत्यादि का भक्षण जो भी। तो इस कारण की वजह से मुख्य कारण ये रहा, इसको इनको अवैदिक कहा जाता है। समयाचार जो विधि है, तंत्र की जो परंपरा है, इसकी जो परंपरा है, इसके भीतर अपने शरीर को ही चक्र बनाते हैं, अपने भीतर अपने शरीर के अंदर ही यज्ञ करते हैं, अपने शरीर के अंदर ही पूजा करते हैं। सब चीजें खुद होती हैं, और खुद को जागृत करने के लिए इस तंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कितना बीज मंत्रों का उपयोग किया है। आप पढ़ें सौंदर्य लहरी, विज्ञान भैरव तंत्र, ये सब ऐसी ग्रंथ हैं तंत्र के
जो व्यक्ति के जीवन को उठा दे। योग में तंत्र का बहुत प्रयोग हुआ है। एक एक चक्र को जागृत करने के लिए एक एक बीज मंत्र है। तो इस प्रकार से एक तो वैदिक मंत्र हो गया, उनका उपयोग आपने देखा यज्ञों में, और तांत्रिक मंत्र वो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत सारे विषयों को कवर करना है। तंत्र का आपने तांत्रिक मंत्र का आपने देख लिया कि कैसे उनका प्रयोग कहाँ होता है। पौराणिक मंत्र, एक पौराणिक मंत्र जैसे पूजा करना होता है तो वैदिक मंत्र है गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, ये वैदिक मंत्र हो गया। किंतु जहां पे यह प्रयोग नहीं कर सकते वहां पे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, ये पौराणिक मंत्र हो गया, इससे पूजा करवाते हैं लोग। ये भी एक प्रकार की मंत्र है। देखिए मंत्र जो हैं ये कैसे प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, हमारे भीतर के जीवन को और बाहर के जीवन को। मंत्र जब हम बोलते हैं तो एक महान ध्वनि, एक साउंड वेव्स बनता है, ध्वनि तरंग, जिसके कारण एक महान ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जिस तरह के मंत्र होते हैं, जिस भाव में बोले गए होते हैं, उसी अनुसार वो ऊर्जा बनती है। और वह जो ऊर्जा बनी है वो प्रकृति में जाके अपने ही तरह की ऊर्जाओं के साथ मिलके और फिर आपके लिए काम करती है। इसलिए आप सुनते आए हैं बी पॉजिटिव बोलते रहो। अभी हम तो जितने रिचुअल्स या जितनी भी हम देख रहे थे, उरावन जी और कल माता जी ने दिखाया, वो पूरा जितना भी वेद शास्त्र पुराण जितने भी प्रार्थनाएं हैं, सब में प्रार्थनाएं हैं, सब में बोलना है। बोलना क्यों है? इसका मतलब है कि ध्वनि में शक्ति है। ध्वनि हम जैसी बोलते हैं वैसे ही हमारे लिए वो ऊर्जा बनके हमारे लिए वैसे काम करती है। ध्वनि का एक प्रभाव है। जैसे कि हमने वैदिक स्वर की बात कही कि जब स्वर के साथ वेद मंत्र नहीं बोलेंगे उसका अर्थ बदल जाएगा। आपके दरवाजे पे कोई आया हो और उसका आप स्वागत करें, आ जाओ, बैठ जाओ, पानी पियोगे, बात तो वही है। आइए महोदय बैठिए, जल लेंगे, पैर तो नहीं दर्द कर रहा आपका, बात वही है, लाइन वही है, लेकिन स्वर बदल गया, ध्वनि बदल गई। कितना अंतर होता है। तो जब लौकिक में इतना अंतर हो सकता है तो वैदिक मंत्र कितना प्रभावित करता होगा इस पूरे ब्रह्मांड को। ध्वनि ही प्रधान है। शब्द ब्रह्म बोल दिया भर्तृहरि ने इसको। तो ध्वनि में बहुत प्रभाव होता है और वैदिक ध्वनि की तो बात ही अलग है। अब बात हमने कई पौराणिक मंत्रों की। पुराण क्या है? आज इस पे बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि पुराण की आवश्यकता क्या थी। बहुत सारे ऐसे लॉबी हैं जो कि कह रहे हैं कि पुराण को हटा देना चाहिए, पुराण मिथ। एक तो ये माइथोलॉजी शब्द क्या है पता नहीं क्या है। पुराण है भाई, पुरा शब्द प्राचीन, पुराण। ये जो शब्द माइथोलॉजी कहीं हो, इसका उपयोग होता होगा, ऐसा नहीं, इसको नकार नहीं रहे, लेकिन इसके लिए एक तो शब्द कुछ माइथोलॉजी, धर्म शब्द के लिए रिलीजन का शब्द का उपयोग करना क्यों भाई? हमने अगर रिलीजन शब्द को लिया है तो आप भी धर्म को पकड़ सकते हैं ना। धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, क्योंकि धर्म के लिए कोई रिलीजन इज डिफरेंट। रिलीजन अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। पुराण को आप माइथोलॉजी नहीं बोल सकते, क्योंकि पुराण ठीक है, कुछ ऐसी कथाएं हैं कि उसने एक घूसा मारा और फिर त्रिलोक हिल गया, अब इस तरह की बातें आती हैं, ठीक है, पर उस पुराणों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? वेद व्यास तक वेद की परंपरा आई और वही वेद व्यास ने ही पुराणों की परंपरा फिर आगे बढ़ाई, उन्होंने उसका रचना की। वेद व्यास तो इतने बुद्धिमान तो थे ही ना, क्या आवश्यकता थी? जानते थे कि जैसे जैसे समय के साथ गूढ़ ज्ञान लोगों के लिए लेना समझना मुश्किल हो गया है और आगे लोग पढ़ना और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने फिर पुराणों की रचना की। उसके बाद आप देखें अनेकों साहित्य रचे गए, लगातार रचे जा रहे हैं और लगातार रचे जाएंगे। इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है। हाँ, आपको बीज ढूंढना होगा तो बीज आपको वहां मिलेगा, वहां जाएंगे तो ही बीज मिलेगा आपको, क्योंकि आपको जब नया कुछ बनाना होगा तो बीज ढूंढना होगा।
तो जो लोग भी नया कुछ बना रहे हैं वो अपने बीज को ढूंढ के वहां से फिर बनाते हैं। किंतु पुराण इसलिए बने क्योंकि जो वेद के गूढ़ रहस्य हैं, जो गूढ़ ज्ञान हैं, सभी के लिए मुश्किल हो गया समझना। उन्होंने फिर उन्हीं बातों को, वही जो विज्ञान है, उन्हीं चीजों को कथाओं के माध्यम से, उसी तत्व को कथाओं के माध्यम से पुराणों में लिखा। अब जब पुराण आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की उत्पत्ति हो जाती है। जिन ऋषियों को हम कई बार मनुष्य मानते हैं, वो ऋषि जब आवश्यक नहीं कि मनुष्य ही हो सकते हैं, शरीर रहा हो, चेतना। क्योंकि हम लोग जब तर्पण करते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण अलग अलग करते हैं। मनुष्य तर्पण अलग करते हैं, ऋषि तर्पण अलग करते हैं। अगर ऋषि मनुष्य होते तो मनुष्य में ही उनको कर दिए होते, ऋषि अलग से करने की क्या आवश्यकता थी। तो जब आवश्यक नहीं है कि ऋषि कोई शरीर ही रहा होगा, या जिन्हें हम आज पुराणों में जो देवता मानते हैं वो कोई गणेश जी, जैसे गणेश जी, जो गणेश जी की आकृति हम देख रहे हैं वेदों में, ये गणेश जी ऐसे नहीं है। ये शिव जो हम बोलते हैं, महादेव, ये महादेव हैं, वो अलग, पूरी बात ही अलग है। तो आप देखेंगे तो कुछ लोग इसे बोलते हैं कि क्या बेकार की चीजें पैदा हो गई। देखिए ऐसा है, जब सगुण और निर्गुण उपासना सबके लिए संभव नहीं थी, व्यक्ति को कुछ चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, तो उसने फिर हर चीज में जो मरुत देवता, वायु देवता हैं, जो नदी हैं, जो सूर्य देवता हैं, उनको उसने एक मूर्ति बनाई। मूर्ति के रूप अपने जैसा, क्योंकि व्यक्ति अपने जैसा कुछ देखना चाहता है, तो अपने जैसा हाथ बना दिया, पैर बना दिया, उसको उस रूप में बनाया, और फिर उसमें अपना ही प्रतिबिंब देखता है। और लेकिन थोड़ा सा अपने से ऊपर भगवान, तभी तो भगवान बोलता है। तो इस तरह से पुराणों में देवताओं का वर्णन, सगुण उपासना का आप देखेंगे कितना उससे प्रभाव पड़ा। तो पुराणों में उन्हीं वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझाकर तत्व को समझाया गया है। पुराणों में हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम क्या थे। यदि आप पुराण को छोड़ देंगे, पुराण को गलत बोल देंगे, तो हमारी जड़ ही हिल जाएगी, हम है ही नहीं कुछ। यदि आप रामायण को बोल देंगे काल्पनिक है, और महाभारत को बोल देंगे काल्पनिक है, तो हम तो बचे ही नहीं। फिर हम हैं क्या? हम कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की परंपरा में वेद को भी वेद बोलते हैं, पुराण को भी वेद बोलते हैं। हाँ, स्मृति ग्रंथ बोलते हैं इत्यादि, लेकिन उसको भी वेद ही मानते हैं, क्योंकि ये भी उसी ऋषि परंपरा से ही आया है। उन्हीं वेद व्यास ने वेदों की परंपरा आई, वही वेद व्यास पुराणों को भी लिख रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति दो चीज को जब दो परंपरा को बढ़ा रहा है, तो कैसे हम अलग मान सकते हैं? पर्पज अलग था, लेकिन उसका पर्पज एक ही था, लेकिन विधियां अलग अलग थी। तो इस तरह से पुराणों का इस विशेष उद्देश्य के लिए पुराणों की परंपरा आगे बढ़ी। अब देखिए कुछ चीजें हैं। अब वेदों में जो विषय प्राप्त होता है उस पर कुछ बात कर लें, जीवन दर्शन पर। वेद जो हैं, वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, आगम निगम, जो भी जितनी चीजें हैं, वह जितने भी हैं एक ही चीज का उद्घोष कर रहे हैं, वह है धर्म। सब मिलकर धर्म का ही उद्घोष कर रहे हैं। बहुत ही पेचीदा बन चुका है शब्द धर्म। धर्म शब्द को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। साधारणतया जिन अर्थ में उपयोग किया जाता है वह है रिलीजन के अर्थ में धर्म को प्रयोग करते हैं, पंथ। धर्म की आवश्यकता क्या है? भाई वेद बोल रहा है धर्म का पालन करो, पुराण बोल रहे हैं धर्म का पालन करो, स्मृति बोल रही है धर्म का पालन करो, सब धर्म का ही पालन करो बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि धर्म को समझना आवश्यक है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि धर्म जो है, चोरी नहीं करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दान देना धर्म है, या टीका लगाना धर्म है, धोती पहनना धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है। तो बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई धर्म है क्या? कहीं बोल रहा है दान देना ही धर्म है, कहीं बोल रहा है धर्म सब कुछ है। मनुस्मृति में मनु जी लिखते हैं धर्म के 10 लक्षण।
धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीहि विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म की जो परिभाषा है एकत्रित जो की गई इतने सुव्यवस्थित तरीके से मनुस्मृति में। अब आप देखें धर्म क्या है। धृति अर्थात धैर्य, धैर्य एक धर्म है। क्षमा, क्षमा करना धैर्य। दम, अपने मन को अपने वश में रखना, मन के वश में नहीं जाना, मन को अपने वश में रखना, दम, ये एक धर्म है। अस्तेयम, चोरी नहीं करना, सामान की चोरी केवल नहीं, काम चोरी भी, किसी भी तरह की चोरी। अस्तेयम, यह भी आपका धर्म है। आप यहाँ कर्म कर रहे हैं, आप यहाँ कर्मचारी हैं, जो भी हैं, यह आपका धर्म है। शौचम, शुचिता, पवित्रता, केवल शरीर के नहीं, मन बुद्धि चित्त सभी अहंकार सब साफ, शुचिता। इंद्रिय निग्रह, अपने सेंसेस को अपने वश में रखना, सेंसेस की तरफ नहीं बहना। धी ही, धी मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करना। विद्या, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का उपयोग करना। धीर विद्या सत्यम, सत्य के मार्ग पर चलना। अक्रोधम, क्रोध नहीं करना। धृति क्षमा दमोस्तेजम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। आप बताइए, इसमें कहीं टीका लगाना, धोती पहनना, पूजा करना आया क्या? हिंदू होना ही सनातन धर्म होना है क्या? जो हिंदू नहीं हो सकता है वो सनातन धर्म नहीं हो सकता। टीका लगाता है तभी वो सनातन धर्मी हो सकता है या हिंदू हो सकता है। हिंदू तो एक संबोधन, मुझे लगता है हिंदू एक संबोधन है, किसी और के द्वारा संबोधित किया गया हमें हिंदू। इसमें कहीं भी पूजा करना तो नहीं आया। धर्म का पालन करेंगे तो एक जगह आता है, न राज्यम न च राजासीत न दंडो न दांडिका, शायद महाभारत का। अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो न राज्य की आवश्यकता है, न राजा की आवश्यकता है, न दंड की आवश्यकता, न दंड देने वाले की आवश्यकता है, न सीमाओं की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे केवल धर्म ही राजा है। आप धर्म का पालन करिए, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो जो हिंदू बोलकर सनातन मतलब हो गया शाश्वत, एटर्नल, शाश्वत। धर्म मतलब कर्तव्य पालन। सनातन ऐसे कर्तव्य जो सनातन है, किसके लिए? इस प्रकृति के साथ के लिए। प्रकृति के प्रति आपका क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। ऐसे जो धर्म का रास्ता दिखाता है, कौन दिखाता है? सनातन वेद। वेद जो है वो समय के साथ चलता है, समय के पीछे नहीं चलता है कि पुरानी चीज और नई चीज। वेद आज भी उतना ही समसामयिक है, और कल भी उतना समसामयिक था, और कल भी इतना समसामयिक रहेगा। क्यों रहेगा हम बताते हैं। महात्मा गांधी का जो पूरा दर्शन है वो केवल ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र पर टिका हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य धनम। इस एक मंत्र पे पूरा उनका दर्शन टिका हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वं जगत, उस परमात्मा का वास है किसमें? इस जगत में जितने भी कण कण हैं सब में इस परमात्मा का वास है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन उन सबको आप जो है त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपयोग करें, त्याग पूर्वक उपयोग करें। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठने वाले हैं 10 बजे अपने घर में और एसी चला दिए 9 बजे, हम जाए तुरंत ठंडा मिले हमें एसी घर। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भुंजिता मतलब उन्हें उपयोग करना है। मां गृधा कस्यचित् धनम, मां मतलब नहीं, गृधा मतलब गृध्र पक्षी की तरह दूसरे के धन पे लोभ मत करो। आप बताइए, ये वेद बोलता है। ईशावास्योपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद। कहां से प्राचीन बात है? कहां से आगे के लिए प्राचीन हो जाएगी या पुरानी बात हो जाएगी? बताइए। ये उतनी ही समसामयिक है जितनी तब थी और
आज भी उतनी ही है। तो जितने भी वेद पुराण इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं वह सब धर्म के पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखें मनोविज्ञान के कुछ मंत्र मिलते हैं वेद में। एक मैं बस 5 मिनट और लूंगा। सौमनस्य सूक्त में सौमनस्य सूक्त है, जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब बताइए, मैं पढ़ रहा था तो उसमें जब मैं मनोविज्ञान के विषय में पढ़ रहा था तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई मनोवैज्ञानिक भारत के हैं क्या। तो कुछ लोगों का ही नाम मिला और उसमें कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की परंपरा भारत में नहीं रही है, बाहर से आई है। अच्छा देखिए मन के विषय में क्या कह रहे हैं, जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। जागृत अवस्था में हमारा मन बहुत दूर चला जाता है, भटक जाता है, और सुषुप्ति अवस्था में पास आ जाता है। ऐसा जो हमारा चंचल मन है वो क्या हो जाए, शिव संकल्पों वाला हो जाए। शिव अर्थात कल्याण, शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी हो जाए, हमारा मन कल्याणकारी हो जाए। इस तरह से इस सूक्त में अनेकों ऐसे मंत्र हैं जो मन के विषय पे प्रत्यक्ष रूप से, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन शब्द की बात आती है। यहाँ मनोविज्ञान दिखता है हमें वेदों में, ये जीवन पे आधारित है। इस तरह से आप देखें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता में देवता, माता को देवता के रूप से देखो, पिता को देवता के रूप से देखो, आचार्य को देवता के रूप से देखो, अतिथि को देवता के रूप से देखो। आप बताइए पुरानी बात कहां से। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। जहां पे देखिए अब सह सह शब्द आ रहा है, साथ में साथ में साथ में। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ में भोजन करें, और सह वीर्यं करवावहि, साथ में हम लोग बल प्राप्त करें। साथ में यानी कि मैं प्राप्त कर लूं, तुम ना प्राप्त करो, तुम भी प्राप्त करो, मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी बात। और ऋग्वेद का सबसे अंतिम मंत्र संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। संगच्छध्वं, साथ 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 हम आगे बढ़े। संवदध्वं, साथ साथ हमारी जो वाणी है वो एक तरह हो। संवो मनांसि जानताम, हमारा जो मन है, हमारा जो चिंतन है वो एक तरह हो। इस तरह की परिकल्पना, इस तरह की चीजें वेदों में है। यह धर्म का ही उद्घोष है। यही है धर्म। आप बिना टीका लगाए भी, आप अमेरिका में बैठ के भी सनातन धर्म के हो सकते हैं। सनातन धर्म कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये कोई सांप्रदायिक बात है। धर्म तो आप समझी गए, धर्म मतलब कर्तव्य पालन, सनातन मतलब जो शाश्वत है। ऐसे कर्तव्य पालन, ऐसे नियम जो शाश्वत है। तो ऐसे शाश्वत वेद के द्वारा उद्घोषित जो धर्म है वही है सनातन धर्म। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। और मैंने प्रयास किया है, मैं सबसे छोटा हूं यहाँ पर, और जो भी मैंने व्याख्यान किया है उसमें यदि कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जिज्ञासाओं का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप लोग कुछ यदि मुझे सुझाना। जी जी शिवंकर जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं इस प्रगाढ़ व्याख्यान के लिए, और अंजनापुरी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शिवंकर जी उपस्थित हैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। आइए।
मैं तो आप लोगों से सीखने का प्रयास करूंगा, जिज्ञासा क्या शांत करूंगा। जो गुरुओं से सीखा है मैंने, प्रयास करूंगा मैं कुछ बता पाऊँ। शंकर जी जी उसका एक नमस्ते सवाल है जी। ये आपने बोला कि वैदिक मंत्रों में इतने छंद है जी लेकिन हमारा देश में ये प्राकृत मंत्रों का भी एक परंपरा है। जी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तमिल मंत्रों का एक परंपरा है। ये प्राकृत मंत्रों में जो छंद है वो वैदिक मंत्रों में भी वो एक ही है, अलग अलग है? नाम अलग अलग हैं। हमने जो बात की है कि जो आज हमें छंद प्राप्त होते हैं उनका बीज वेदों में है, हम ये कह रहे हैं। जो मेरा प्रयास रहा पूरे व्याख्यान में कि जो आज हमें प्राप्त चीजें हो रही हैं उनका बीज वेदों में है। एक और सवाल है जी। दक्षिण भारतीय ग्रंथों में जी लगभग प्रथम सहस्रमानी के अंत तक मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं है। जी तिरुकुलर में केवल धर्म अर्थ काम को जी, बताया गया है, जी। मोक्ष की कल्पना नहीं है। और तमिल में जो भक्ति साहित्य है वो 6 और 6-7 सेंचुरी के, उसमें भी मोक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। जी वेदों में मोक्ष का उल्लेख है क्या देखिए पहले से? वेदों में मेरा मानना है कि मोक्ष की कल्पना जो आई वो समन पंथों से आ गया, वो बौद्ध और जैन धर्मों नहीं से। ऐसा नहीं है, उससे पहले से प्राप्त है। हाँ हाँ ये है कि मोक्ष की जो अवधारणा आई वो बाद में आई, हाँ क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है उसमें आप देखेंगे जो प्रैक्टिस की जाती थी वह यज्ञों की प्रैक्टिस की जाती थी। और वह जो आदि शंकराचार्य निकले तो वहाँ जब पहुँचे मंडन मिश्र के पास तो उन लोगों का मानना ये था कि बस स्वर्ग तक ही उन लोगों की एक अवधारणा थी, यज्ञ करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बस उससे ऊपर कुछ ज़्यादा विचार करते नहीं थे। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने उनसे तो मोक्ष की अवधारणा बाद में आई है और वेद में पहले है। क्योंकि किस शब्द उपयोग करते हैं वेदों में? अगर मोक्ष का जो अर्थ है उसको बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन उपनिषद ग्रंथों में है। उपनिषद ग्रंथों में रुद्र प्रश्न में है? रुद्र प्रश्न में नहीं होगा मुझे लगता है। उपनिषद, क्योंकि रुद्र प्रश्न तो वेद भाग है, मतलब वो संहिता भाग है। उपनिषद भाग तो अलग है। जी धन्यवाद। अभी वर्तमान में याद नहीं आ रहा मुझे वो चीज़। शिवांकर जी मेरा सवाल बहुत सरल सा है। जब हम बाजे में वेद मंत्रों को बजाने की कोशिश करते हैं, जब बाजे में किसी भी बाजे में तो उसमें अगर वेद मंत्र को बजाने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए स्वरित को अगर शरज मान के चलते हैं तो उदात्त रे तक जाता है, शुद्ध रे तक, और अनुदात्त कोमल निषाद तक जाता है। तो क्या आपने कभी विचार किया कि इन्हीं श्रुतियों के बीच क्यों मतलब ये इन तीनों स्वरों को बांधा गया? क्यों उदात्त और ऊंचा क्यों नहीं गया और अनुदात्त और नीचे क्यों नहीं गया? नीचे वाली बिल्कुल श्रुतियों गया में। है, बिल्कुल गया। अब जैसे जब उच्च नीच की बात कर रहे हैं आप, उच्च उदात्ता नीचे उदात्ता, पिच तो इसमें भी प्राप्त होती है। पिच की बात कर रहे हैं आप? हाँ तो बिल्कुल है, पिच तो है ही है। अब जैसे हम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ओम गणाना, तो पिच तो है ही है, पिच तो क्यों नहीं है। जो आप दूसरी बात आप बोले कि वेद मंत्रों को वाद्य यंत्रों में बजाने की कोशिश करते हैं ना, वो तो सही नहीं है। प्रयास आप करिए, प्रयास करिए आप, लेकिन वेद हम कह रहे हैं कि स्वर, हमने वहां पे कहा कि वेद मंत्र और जो वेणु जो वाद्य है उसमें स्वर का कैसे समानता है, ये बात मैं कह रहा हूँ। मंत्र को आप बजाएंगे तो मंत्र तो वैसे आएंगे नहीं, क्योंकि फिर वहां तो ध्वनि है ना, वहां तो स्वर है और यहाँ शब्द है, शब्दों के अर्थ होते हैं। और जो वाद्य में आप बजाएं उनका कोई अर्थ तो होता नहीं है, वो ध्वनि होते हैं, प्योर ध्वनि। तो ये चीज जी आप ये जो विषय है बहुत ही अथाह है
और इसकी जो परिकल्पना की वो स्वप्न सुंदरी जी ने की। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो शिवंकर पाठक जी के साथ आकर अपने विचार व्यक्त करें। आइए। नमस्कार। शिवांकर जैसे मैं इस प्रवाह से हिंदी और वो भी शुद्ध रूप में मैं बोल नहीं सकती, मगर I also believe that every word that is said in this seminar must reach everyone whom we have invited and everybody who is listening and seeing online, and therefore it has been a conscious effort on my part to keep the language of the seminar, the major portion of the seminar where speakers feel comfortable to speak in whatever language they choose. We did not set any boundaries, and I'm happy to say that yesterday, in spite of the language, dhwani ki baat aapne kahi, to dhwani is important, yes, but the dhwani se upar bhi, I also believe, coming from the background of dance, which is a part of theatre, that communication can be done in so many ways, and yesterday we saw living proof of that every gesture, everything that was done on the stage by respected Dhoni Devi had reached each one in the audience, even though we did not understand, many of us did not understand her language. So there is that correlation between Dhwani and gesture. But I'm here not to talk about that. I'm here taking a little bit of time along with Shivankar because the subject we want to jointly speak about is in response to a certain observation, some observations I overheard, that the presentation Beeja, and I'm here not now as a curator, but I'm here talking about the presentation Beeja and what is the background, and a little bit of help from the Sanskrit text on which Pindotpatti is based. Beeja, the presentation, is limited in its scope. It has been kept limited in both in terms of time it takes and also the content. We had consciously combined cosmology, embryology, and with contemporary techniques to tell how the process of creation happens biologically in the human species. So, but this does not mean that it came without a background, nor was it a self-conscious effort. It was something that has been in my mind to recreate in terms of easy comprehension, just as आपने ये कहा था कि जो आध्यात्मिक विषय है, वेद से पुराण क्यों निकले और पुराण की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि निर्गुणी एंड जो चीज़ व्यक्त नहीं हो सकता है, जो एब्स्ट्रैक्शन है, उसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए पुराणों की आवश्यकता थी और इसकी उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई। उसी प्रकार से जो inspiration था to create something on the concept of Beeja, since we had asked all the scholars to talk about Beeja in their respective traditions, fields and specializations, I felt that nobody had talked about the very primary Beeja. अगर हम नहीं होते तो मेधा नहीं होता और मेधा नहीं होता तो आज ये सेमिनार नहीं होता। हम पहले हैं। The human species has to be created first and then only whether आपने ध्वनि या मंत्र मन से देखा या मन से परसीव किया, वो तो एक मनुष्य के, ये और बात है कि ऋषि necessarily was not a person, but there was a human presence at some point in time of the evolution of the Vedas in order to be able to transmit knowledge, first perceive and then transmit. Stemming from that, I am taking the help of Shivankar. We want to together tell you what inspired the production Beeja. Here, first of all, I have to talk very little, very briefly. It's not possible to discuss the entirety, and we have a wonderful presentation we're waiting to see. That Golla Kalapam, as Mridulji explained, is a part of the traditional texts danced by the Devadasis of the Telugu areas. But it also has a parallel in a text called Atma Yajnam. Atma Yajnam is actually the yajna performed of the Atma. Now, this has been dealt with by liberatists
who were engaged with the Vedas, Vedic studies. They were the Brahmins who were studying Vedas. And they imparted the librettos to the Devadasi community. The Devadasi community faithfully took it forward. There have been many interpolations. I had to get to the root of the text, the original text, by wading through the interpolations, which I could see very clearly. And though it has not been said so clearly, it has its roots in one minor Upanishad. And this is the one we are going to share. Because बात एक आई थी कि भौतिक और आध्यात्मिक की एक बात आई थी. भौतिक रूप में हम जन्म लेते हैं और पंचभूतों का जो एक सम्मिलन है उसी से मानव जाति की उत्पत्ति हुई. उसके बाद ही चिंतन हुआ, उसके बाद आध्यात्म बना. आध्यात्म पहले नहीं बना, बाद में बना. तो you had to have a form to have a thought. So that is the principle behind including embryology as a part of the Beeja motif, not simply to show. For that, an artist need not have done it. A gynecologist would have done it better. But an artist, to bring that into a correlation with the concept of Beeja, I felt it was necessary. Without justifying it further, I want to share, both of us would like to share the text. It's a very small Upanishad. It's a minor Upanishad. It is called Garbha Upanishad. Garbha, pregnancy, or womb Upanishad. It's a minor Upanishad. It's a composition of Vikpalada. And there is a lot that can be said. We will go straight into the text and then leave the audience. We'll leave all of you, the scholars, the audience, and those who did make these observations to think whether the connect between Bhautik and Adhyatmik exists, or we are really talking about two sides of the same coin. Let us start. And thank you, Shivankar. जी, आपको पहले मंत्र बोलना है, फिर मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगी. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. First, the पहला वाला. ओम पंचात्मकं पंचसुवर्तमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तं तत्सप्तधातुत्रिमलं द्वियोनिः चतुर्विधाहारमयं शरीरम्. The body is fivefold in nature. It comprises of 5 elements existing in the 5, depending on 6 supports, that is the taste of food, Shadruchi, connected with 6 qualities, consisting of 7 dhatus, tissues, 3 impurities, having 2 yonis, that is 2 genders, and nourished by 4 kinds of food. भवति पंचात्मकमिति कस्मात् पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति यस्मिन् पंचात्मके शरीरे का पृथिवी का आपः किं तेजः को वायुः किमाकाशम् तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपो यदुष्णं तत्तेजो यत्सञ्चरति स वायुः यत्सुषिरं तदाकाशमित्युच्यते. How is Panchatmakam fivefold? How is it? Because of the 5, earth, water, fire, air and ether. In this fivefold body, what is earth? What is earth? What is fire? What is air? What is ether? What is water? It is said that what is hard is earth, what is fluid is water, what is warm is fire, what moves is air, and what is space is ether. We have used these lines. This is from Garbha Upanishad. तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुर्गमने आकाशमवकाशप्रदाने पृथक् श्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक् स्पर्शे चक्षुषी रूपे जिह्वारसने नासिकाघ्राणे
उपस्थश्चानन्दने पानमुत्सर्गे बुद्ध्या बुध्यति मनसा संकल्पयति वाचा वदति. There is earth to support, water to consolidate, fire is for light, air is for movement, and ether is to provide space. Separately, ears are to receive words, the skin is for touch, eyes to see the form, tongue for taste, and nose for smell. The genitalia are for pleasure and apana for evacuation. One cognizes with the intellect, buddhi, very important, underscore. One cognizes with the intellect, buddhi, envisions with the mind, manas, and speaks with the words. These all involve all the panchabhutas that have been, jiska ullekh yahan hua hai. Without that we cannot speak, we cannot see, we cannot smell. षडाश्रयमिति कस्मात् मधुरां ललवणतिक्तकटुकषाय रसान् विन्दते. षड्जर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवत निषादाश्चेति. इष्टानिष्टशब्दसंज्ञाः प्रणिधानदशविधा भवन्ति. How is sixfold support? It is said that there are 6 tastes: sweet, acid, salty, pungent, bitter, and astringent. And Shadja, Rishabha, Gandhara, Panchama, Madhyama, Dhaivata, Nishada together make agreeable and disagreeable sounds. Can we go straight to the Pindotpatti? यह से ऋतुकाली से ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले का बैकग्राउंड है और हम आगे जाके हाँ यहाँ से ले सकते हैं आप शुक्लो रक्त कृष्ण वहाँ से ले सकते हैं. तो ये 6 शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डुर इति. सप्तधातुमिति कस्मात् यदा देवदत्तस्य द्रव्यादिविषया जायन्ते. परस्परं सौम्यगुणत्वात् षड्विधो रसो रसाच्छोणितं शोणितान् मांसं मांसान् मेदो मेदसः स्नावा स्नाव्नोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्जा मज्जः शुक्रं शुक्रशोणितसंयोगादावर्तते गर्भो हृदि व्यवस्थां नयति. It has white, red, black, grey, yellow, tawny, and pale are the colors. What are the 7 dhatus? It lists that. I will not waste time translating that part, but I am coming straight away from this. From the proper combinations of qualities, 6 types of tastes emerge. From the relish of food, blood is created. From it, the flesh, fat, bones, marrow, semen. By the combination of semen and blood, the embryo or garbha is born, and its growth is regulated by the heart, the mother's heartbeat as well as the embryo's heartbeat. हृदयेन्तराग्निः अग्निस्थाने पित्तं पित्तस्थाने वायुः वायुस्थाने हृदयं प्राजापत्यात् क्रमात्. The 7 dhatus are in the heart where there is enough fire. At the place of the fire is pitta, at the pitta organs is movement, and at the vayu place is the heart, all growing in order with the law. ऋतुकाले संप्रयोगात् एकरात्रोषितं कलिलं भवति. सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं भवति. अर्धमासाभ्यन्तरेण पिण्डो भवति. मासाभ्यन्तरेण कठिनो भवति. मासद्वयेन शिरः सम्पद्यते. मासत्रयेण पादप्रवेशो भवति. These are the lines we have used, exactly. When ready, the joining of the male and female forms the embryo, and the night is in a mixed, it's in a semi-fluid state. After 7 days it becomes a bubble. After a fortnight it becomes a mass. In a month it becomes hard. In 2 months it develops the head, and in 3 months the feet grow from the fetus. अथ चतुर्थे मासे जठरकटिप्रदेशो भवति. पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति. षष्ठे मासे मुखनासिकाक्षिश्रोत्राणि भवन्ति. In the 4th month, belly and hip are formed. In the 5th month, the backbone is formed. In the 6th month, the nose, eyes and ears are formed. सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति. अष्टमे मासे सर्वसम्पूर्णो भवति. In the 7th month, the embryo attains jiva, that is the conscious self, and in the 8th month it becomes complete in every sense. Now we would like to stop here because the Upanishad goes on very, very precisely to say
how a female child is conceived, how a male child is conceived, and during the time of impregnation, how the mood of the parents, the progenitors, affects the child's nature and how. And therefore, these are metaphysical. We do not know. No gynecologist or obstetrician can tell us that whether the child will be hot-tempered, whether it will have a cool head, whether it will have a sattva guna, whether it will have a rajo guna. This is beyond science. It is metaphysics. It is, to a large extent, I would say, abstraction from a very, very simple, basic, embryonic conception of the embryo. From that, it goes into the area of what is called today. I mean, people use the word paramedical. I don't think that's the correct term. This is something beyond what empirical, scientific analysis can tell us. Even doctors cannot tell us what the Upanishad tells us, what the Vedas tell us, which is the mystery of creation. The ultimate mystery is not the biological process. The ultimate mystery is the subsuming of the physical faculties and consciousness and inner consciousness of the two, the male and female, who unite together, and thus the embryo being formed. Beyond that, even the Golakalapam, the Pindotpatti, as well as its original, the source, the root source, that is the Garbhopanishad, goes on to talk about the relationship of Atma and Paramatma, and that parents are only carriers, or the bodies are corporeal vehicles through which a life enters the earth. Neither can the parent regulate how it will behave, nor can we regulate the chromosome selection, nor can we regulate the genetic qualities of the child or any other part of its birth except to physically conceive and give birth to the child. That is where it rests, and therefore cosmology does come in here, theology comes in here, so does science, and to a lot, of course, starting with embryology. Therefore, I hope I have answered. I heard also one more comment. Thank you. I heard one more comment about Shastra, and that in Natya Shastra, certain things are not allowed. I'm just going to conclude this because I'm not going to be taking questions. Because if you take questions, then it will go into a long... Yeah, it will take a long time. We don't want to eat into the chow wonderful presentation that we're waiting for. But it did raise the comment I overheard as a director of this particular program, in which capacity I stand here, not as curator of Beeja, but as the director of this audiovisual multi-modal presentation. I heard a very, very learned scholar amongst us who was overheard saying that Natya Shastra permits this and does not permit that. I would like to submit very humbly that the Natya Shastra is a manual, it is not a jail. The Natya Shastra, or any Shastra for that matter, does not give you a life sentence. It is to give you guidelines about what is and the Auchitya. And theories of dramaturgy have changed from time to time. We have, yesterday we had a wonderful presentation of body, voice, connect. Now, if you go by the Natya Shastra's definitions, and if we bind ourselves in that, then we are going to be building more walls instead of bringing down walls and trying to understand every scholar's work and also the regional traditions that they represent. That is why, if Natya Shastra was the fixed framework within which everything had to develop, we would not have so many Lakshana Granthas which have emerged. In fact, the Lakshana Granthas, regional Lakshana Granthas, far outstrip that one Natya Shastra. So I think Natya Shastras, उसमें ऐसा नहीं है कुछ उल्लंघन कर रहे हैं या किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं. And one important point for all of us dancers and all of us dramatists, everyone in fact, to remember is that Natya Shastra does make provision at the end of every important statement. After this, it is the Manodharma, or as per the imagination of the actor, dancer, singer, and as per the custom of that area, the land. So Desya Prayogas are also very important. So Desya Prayogas are also accommodated in Natya Shastra, and also it says as per the wish of the patron. So these are the areas we should also be looking at, not simply about what Natya Shastra said you can do or you cannot do. I do believe the artists, every person's individual thinking, imagination,
and expansion of the thought process is something that is natural and cannot be and should not be curbed, because we are also preoccupied correlating our work with what has been said before, what has been done before. We had this young Vedic scholar who had just made it very, very contemporary and brought it down to the reality of today. And I do believe that as a very, very senior exponent of one of the art forms, I do believe that this approach is healthier for the growth and preservation and further flowering of any tradition. Thank you very much. Thank you so much, Swapna ji. And now we have the next paper being presented by Shagun Bhutani. अपनी कला के संदर्भ में इस विषय पर प्रकाश डालेंगी और आज उनका साथ दे रहे हैं शुभम आचार्य, श्री लक्ष्मीधर गुनिया, श्री सचिन महतो, गुरु दिलीप महतो, and above all, Guru Shashidhar Acharya. ये सेल नहीं होगा ना कोई।
Namaskar. What we just felt in the beginning was the Jatra Ghat. It's a rhythm that is connected to the rituals in the land of Chau and followed by the Namaskars and the Salamis of the three different styles. I'll begin my lecture. The central dot is like the kernel from which the lotus plant sprouts and gradually proliferates to finally take over the entire pond, leading to a dense growth of buds, a range of half-open to fully bloomed flowers, intertwined stems, leaves, fruits, weeds, combined with the ripples of water, underwater life, bees and birds, filling up the entire space of the painting. These words are not of an artist who is educated in way the modern world conceives of the terms educated, literate, so on and so forth. But these are the words of the legendary Madhubani painter Ganga Devi. And they're translated by Jyotindra Jain in his book, 5 Contemporary Folk and Tribal Artists of India. Today, we participate in a seminar that has been conceived of by an artist par excellence, and I won't call her a legendary dance exponent, because that would be like confining her to be finite, when in fact she is infinite in her creative processes. Similar are their thoughts, as both emerge from the realms of the universal spirit,
that which is the source of all creative expressions. And both these legendary artists, Ganga Devi ji and Swapnasundari ji, communicate constantly with the universal consciousness and thus are eternally inspired. So thank you, Swapna ji, for planting a beej that we hope will sprout into a kind of a new tree of shared knowledge, and to Sangeet Natak Academy for enabling and supporting this noble endeavor. I'm privileged to have with me on stage my Guru, Sri Shashadhar Acharya, and Sri Dilip Mahato, who is an exemplary practitioner of Purulia Chau, and my young co-artists, Shubham Acharya, Lakshmidhar Gunya, and Sachin Mahato. Come and sit on stage. So Chau is a community act, and I thank Sangeet Natak Academy to have manifested that community for me on stage today so I can make a more meaningful presentation. And right in the beginning, I want to add a disclaimer that this lecture and demonstration is not from a point of view of a scholar. Whatever I say is what I have felt through my dance. So I was telling Dilip that आप लोग ज़मीन से उपजे हैं लेकिन मैं ऊपर से टपकी हूँ. So whatever I felt, and I think I felt the essence of Chau, but I have felt it only through the physical practice of it, and that has gone in. So it's not a theoretical discourse on any aspect of dance, but it is through a dancer's journey into this phenomenal art form. So Chau dances today are known through its three styles. So you saw Saraikela, Mayurbhanj, Purulia, theatrical, vibrant, and earthy. To most people, practitioners, students, and the audience in the urban milieu setup, they see Chau as a vibrant performing tradition that is performed on the proscenium stage. Aspects of it are used in contemporary choreographies and theatre productions. So it's very popular in that way because of, and that's how people know of it. But I think the objective of this lecture and the larger purpose of this exercise is to stretch our scope of perceptions. So yesterday Anjana ji said to unlearn, to break the clay. Natraj destroys to create anew. So my term for that would be that I would like to unsee, or people to unsee, those very aspects of Chau that qualify it to be only a performing tradition. So to look beyond the visible beauty of its movements, the alluring rhythm, because the rhythm energizes a lot of people and draws them into Chau, a rich repertoire of compositions, and a very theatrical use of mass. So when you unsee these and you go beyond them, you will experience Chau at its source. And when you experience Chau at its source, you realize that in fact it is a ritual that echoes a unique culture spanning from the primordial visions of the autochthonous cultures to the myths and rites of the Puranic practices. So my personal journey into Chau started with a simple desire to learn how to use the body to animate the mask. I had already been doing Odissi for many years before I came into Chau, and I really sort of loved the use of mask and how it's animated. So I started my training from Bhaiya's father, Guru Sri Langaraj Acharya, who after about a year wanted to go back to Saraikela, and he handed me over to Bhaiya. That was not my choice, but in retrospect, I think it was a very
is very fortunate to have been with these two gurus who taught me the art in a very meticulous way. I mean, there were no shortcuts. And also, their own traditional theories behind what we were doing. But they never influenced the way I embraced the tradition. And as we went into practice of many years, we really practiced a lot in Triveni in those days. We were there the whole day practicing. Bhaiya was freer then, so he was there with us. And as I interacted with the tradition on different levels, because I met other Chow dancers, and then the exercise of making the film for UNESCO, where we had everybody, and talking to them, it sort of made me, it took me to what Chow is really. And I realized and by then my own physical practice of the movements had become stronger, and I realized that the movement impulses in Chow are actually, they fulfill the universal function of a ritual. Now, there may be many ways of doing a ritual. Everybody's doing their own rituals, even in the religious realms. But for me, a ritual is something that connects you to it creates that impulse in you that there is a single life force that animates the whole created world. There's not many life forces. There's one single life force. And that we have to be united with other beings to feel that life force. So for me, the ritual has that one single meaning in simple terms for me as a human being. And Chow fulfills that intent in me. So I just want to read from a few lines from Ajit Mukherjee's book, The Ritual Art of India. And in his introduction, he writes, all life is related. The role of animal in Indian myth and religion generally points to this. For divinity and animal nature are never seen as opposed, but as points on the continuum. Animal grace and power are used as metaphors for aspects of divinity. Now, the three forms of Chow, they are palpably different in their development and in their denouement. But they have shared roots in their movement vocabulary and also the underlying philosophy within which all movement is executed and practiced and created. So, the inclusion of a set of Charlies that are simply the gates of animals and birds, gods and demons, form a very important aspect of the Chow training. I think Krishnenduji said that there is something called, I forget the word, the Stobhas, which are also in Kudiyattam, and they're the Charlies of birds and animals, but they are the Madhyama and the Nicha. They're not the Uttama part of Kudiyattam, but in Chow, the Charlies are what you start learning with. And I think that's because it was a place where people just lived in this abundant nature. So the first thing that you do is you learn to commune with your surroundings, animals, what is around you. So the Charlies were given a lot of importance. And also it was like a proclamation to whoever wanted to participate in the ritual of Chow. To all, because it was open to the community, that the world is not just our realm. The realms are many in this world. Some are known and seen, but there are many that are not known. So Chow incorporates that sensibility in its training. And so by learning, so when you learn to depict another being or a character, not character, but another form of life, and in the repeated practice of it, so you practice it your whole life, what you do is you're forced into a process where your awareness and consciousness learns to recognize the instinct of another life form. You learn to be that life form. And in that, you learn the eminence of a universal consciousness. So, I mean, if we come down history, we heard about the seal from the Indus Valley, which is of the Proto-Shiva.
and it has the figure sitting in a yogic posture, and the yogis say that it's the first depiction of the Mula Bandha. He sits with a horned headdress, and there are animals around him, and that's why they call him a proto-Shiva, because Shiva in one of his forms is Pashupati, he's the lord of all beings. So you have him. Then you come down, of course the Vedic and all that period happened, and that also gives importance to other life forms. You come down to Buddhism, the Jatakas, which is a folk-based apocrypha. Buddha had to live the life of a bird, a stag, a jackal, a horse, an elephant before he came into a life of godhood. Then we heard Ramashankarji, he said that the Gotras of the Oraon also have names of animals. So he himself is a Lakada, which is a tiger Gotra. So the Chau dancer echoes the same timeless wisdom as he and she or she enters other life forms through a daily practice of Charlies. So here I'd like to just demonstrate one or two Charlies by myself before the boys do it in different forms. After I started doing Chow and after I'd done it for 5-6 years, I went to New York to study contemporary dance. And I lived there for 2 or 3 years, and I wanted to do the Graham technique because for me it was a very powerful technique. And the Graham technique works on contraction and release of the pelvis. So when I was there and I was doing those movements, I realized that Chow has the same contraction and the emerging of the movement from the center. And then I would think that these people who created Chow, because we don't have too much, in the evolution of Chow, we don't know who contributed to what part of that, because it's not written and it's kind of lost a lot of the knowledge. So I would think that how are these people who are sitting in this, in a space which is just cut up from the rest of the world. It's not even cut up from the West, yes, but even within India, it's such a secluded place, of this natural beauty, hills around it. And they had the same impulse to create the movement. They felt it in the animals, and they created this beautiful vocabulary of movement. But that is, again, connecting to that universal consciousness, because the knowledge, what everybody receives from there is the same. There's not that Martha Graham received something else in America where she was aware of, all kinds of movements and everything. And the Chow dance creators, they got it directly from the universe. Nobody told them. So I want to just show you that contraction. This is the peacock, and it also contains in it the primal impulses of movement. The movement of the pelvis, that's a primal, and the Kundalini resides there, the chi of Tai Chi. It's all here, and it is reflected in Chow. This is one
So just like intent, and then you use the same Charlie in composition like the hunter. So so these are the things which evoke certain impulses in you when you practice it. And that is very powerful in Chow. Now I'll request these young boys to depict a few Charlies. Sorry. So the Bagh Charlie, which is the walk of the lion, first in the Saraikela form done by Shubham. So again you saw that feel of a lion, the king of the jungle as he walks, and again you manipulate this part of your body. Mayurbhanj. Sada Charlie. Rulia. Now there's it's a ufli, yeah? Bagh Pani ki has a ufli. So there's a ufli which shows the act of the lion drinking water, which is both done in Saraikela and Mayurbhanj. So I'll request the boys to do that. In Mayurbhanj style now.
I think the Purulia already had it in the bar. Charlie, only this moment was there. Next, we're going to show the monkey. So in Purulia, it's called Bandar, but in Mayurbhanj, it's called Mankor Chitti. So Mankor is a monkey, which made me remember the word very easily, and Chitti is the consciousness of the monkey. So, pehle Lakshmi tu kar. That's only Purulia. So the vocabulary is very defined when we learn in Seraikela and Mayurbhanj. But in Purulia, they don't have all this division because they basically practice the composition and everything fits into them. So we have to actually search कि ये यहाँ से ये movement ही होगा, but they don't define it the way Seraikela and Mayurbhanj dancers do. The next one is the jump of a goat, and if you go to, at least I have been to Seraikela, and you see a lot of goats in the living culture. So of course, that had to be translated into the goat jump, and it's called Chedi Diya. In Seraikela, Shubham will show it. In Mayurbhanj. Now they'll do the Mayur Chali, which is in all three styles, and followed by the Garud, which is also in all three styles. मयूरभंज में भैया मयूर तीनों स्टाइल में मयूर
Yesterday when we were practicing it, I told Dilip ki Mayur or Garud. So they did the same thing. And today, of course, I think they've added a bit of the technique. So I said, isme alag kya hai? So the thing is that in the costume, the bird feathers are different. So in the peacock, he keeps his hand here, and the Garud, the wings are different. So Dilip said, wo alag hai. So you see, the Purulia is the most naughty chow in my opinion, because you don't know what they end up doing, but they do what they know, and we don't understand it, but they are very sure of what they are doing. The next, again, another conversation with Dilip, which I just had 2 days back. So I told him कि असुर चाली दिखाना है. So he said कि असुर तो वीर है. So I said, but and Dev, so he said, Dev, but jab Ram and Ravan are fighting, he said Ram will also walk in the same chali as Ravan. So that is also another aspect of Chau, which I realized. It's a very equalizing. It doesn't make judgments on, on good, bad. It embraces everything. So because when Ram is fighting, his first dharma is to be a soldier. So that's why the chali of it's called Veer Chali, and it's the same thing they use for the demon also. Veer Chali ko dikhana. I want to show Akash Chali because it's the Chali for the gods. So in Seraikela you use Akash Chali because they are descending from the heaven, and in Mayurbhanj we'll do Dev Chali. Vishnu. Vishnu. पहले आकाश सराइकेला.
देवचाली करनी है दिलीप देवचाली पुरुलिया The next thing that I want to speak about, being a woman myself, is the role of a woman in Chow. Traditionally, women did not dance Chow, but the technique, the movement honors the woman and the feminine in many ways. So there are a whole lot of phrases of movement that are taken, inspired from a woman. Uflis, which is the second section of the Chow, the movement vocabulary. There are 18 Uflis that are called female Uflis, and some of them imitate in movement the work done by a woman in the house. So, in doing that, the creators again gave the importance of, those mundane activities, and they codified that way of life in the movement. So, when we begin, we will first show, you're going to show the Bhangimas, the Radha Chali, and then the Bhangima. Yeah. So, Raikela mein, we'll show the Radha Chali, which is also the Surugati, and then Shubham will show some Bhangimas, which are phrases of the woman, this particular one, of being a mother and playing with the child. Do the Bhangima and Radha Chali and Mayur. You can do it with the... 2, 1, 2, 3, 4. Shubham, now do the Radha Chali and then we get Lakshmi to do the Mayur Bhanj.
So, Lakshmi, and that's another interesting thing that when I talk about, एक minute. When you talk about expanding your consciousness, so in Chao you're doing these men are doing female movements. So when his name is Lakshmi Dhar, so yesterday I asked him, what should I call you? He said Lakshmi. So it's for me it's very refreshing, because if you tell a boy in a urban setting, if I call you Lakshmi, they'll automatically say it's a girl's name. But here is somebody who's so comfortable with that, as they are comfortable in depicting a female character or doing movements which are feminine in appearance. Chalo. Anta Chola. This is called Anta Chola. तो दूसरा दिखा नाटी गुड़ा थोड़ा कम नाटी गुड़ा. So this was what he showed was Anta Chola, and it is something like the Radha Chali of Saraikela. But now he's going to show Nati Guda. Just to show the female, the lead. Can I say something 1 second? So, when you talk about the female consciousness and altering your consciousness, then you hear of, you know of saints like Ramakrishna Paramahans who would, depict, who would become feminine in altered states of consciousness. And for me, Dilip's depiction of the female is truly something spectacular. The way he suddenly becomes a woman when he shows the female character. Mask is something.
अलग भाव आए के गो माके सरी पड़े ए ए ओनादो सातरे अस्त्र धरे नाची छौ घर सोरे The next thing that I want to speak about, and I'm going to be a little more brief because I think we are getting late to break for lunch, and I want the film on Chow to be shown, which we had done for UNESCO, because I'm talking about Chow from a dancer's point of view, but the film puts it in, in the tangible aspects of Chow can be seen in the film. I'm somehow talking about the intangible part of Chow itself. So the second aspect that I wanted to share is the month of Chaitra in April, which is celebrated all over India and some as a new year. And so in the region of Chow, there is a celebration of Chaitra Parva, and it has a ritual of about 5 days, and a lot of performances of Chow are connected, not connected, but they're always performed during Chaitra. All the Chow groups are very busy because they are dancing everywhere during the Chaitra. So the Chaitra Parv, the ritual, at least in Saraikela, the one I have seen, it is centered around a ghat. So we can draw parallels between the haifu which we saw of the Lai Haroba, of the Randal Puja which Viralji spoke about. So there was a Kalash. Then you see that symbol of the pot, the earthen pot, in the Mangal Ghat, the Purna Ghat, in iconography. So it's one of the Ashtamangals in Indian art and thought. So that connects us, and basically the earthen pot is the vessel character of the feminine archetype. So you find it all along the indigenous and the Vedic. In all the rituals, the ghat is very important for us. So the Chaitra Parv, revolves around the ghat, which is filled with the water of the water body which is around, and Khadkai river is the one in Saraikela, and that represents the vital sap, the amniotic fluid, the primordial waters from what creation emerged. So you see every time you talk about Chow, you talk about the rituals of Chaitra Parv. But Mohan Khokar, he was a legendary scholar on Indian dance, on all forms of Indian dance, and he wrote in his book Traditions of Indian Classical Dance that for centuries the Chow has been an indispensable feature of the most sacred festival of Saraikela, yet it has no religious import whatever and exists purely as a form of stylized dance. So when I read this, I will totally oppose it. Because when you see the rituals, it is actually an enactment like Chow. Because you have the bhaktas, the people, and they are taken from, they are just chosen out of the people, and they go through these purificatory rituals to make themselves pure for the rituals of Chaitra Parv. And the one who carries the ghata, you see, when you watch the ritual as a Chow dancer, as I did, there is this, there is this beating of the drums, and then
at the climax, the bhakta, he gets possessed and enters a trance, which is like a communion with the spirits of the cosmos, and his face is just very fixed. But there is a lot of movement in his inner landscape. You can feel it. And the crowds are thronging around him and the drums are beating. So for me, that is a Chow performance. So the Chow dancer makes the body perfect through practicing, and makes it perfect for the ritual of Chow. And then you wear the mask, which I'll just show you the mask, which sort of, which is like a trance, because in a trance a spirit comes, but the mask becomes that. And it pushes you inwards, your own being, your own individual self disappears, and this takes over. So there's this moment of nothingness. And then the drums start beating, and then the ritual of Chow is enacted. So for me, Mohan Kokar, who I respect a lot, but he could not feel how that ritual is actually connected to the ritual of Chow. So Professor Khandke said that he was talking about the rituals of theatre. So for me, that was the performance of the ritual was something like Chow, and Chow is the ritual of theatre. And the performing of the Chaitrapad was the theatre of rituals. So there's this deep connection and feeling which you can only feel when you wear that mask. And I have lots of interesting stories about, how the mask, because I was very scared of the mask. Traditional dancers don't fear the mask. They just put it on and they are sort of ready to go. But for me, so when I first put on the mask, I think it was 2 years after I'd been training with Bhaiya, and there was a recording for a television show, and he said, Chalo, you have to do Chandrabhaga, and I went, and he suddenly put the mask on me, and I said, oh my God, what am I going to do with this now, because I'd never worn the mask. But the Chow dancers grow with it, and they don't fear it. And for me, that has come after a long time, that now I can just put on a mask and be comfortable in. But before, I used to wear it 15 minutes before my item, so I could get comfortable. But it has the quality of, of changing you into a shaman. You get the spirit of the mask in you. And in Mayurbhanj, you will see that same immobility of the face, which you see in the trance, when the bhakta is in a trance and you see that face in a very fixed way. In Mayurbhanj, you see that when they dance. I don't know if you have the time, but I wanted to show 2 minutes of the items of... Okay, so then I'll just show you the mask, and Shubham, can you just pick up a mask and just put it against the light so they see? ये mask उठाना. Sachin, एक mask उठा पुरुलिया का. No, just put it like that so they see how it goes. You see, when you wear a mask, this is all you see. These are just the holes. So you can only see like that. So you're not seeing. You're just inward. You're only seeing with your mind's eye. And there are 2 holes for the air to come in. So that is how it just takes over you when you wear the mask. And so the Purulia eyes are bigger, but if you hold it, it is so heavy, and they wear this and they do all their very difficult technique movements of jumping, the paltas with this. You hold it, it must be, kitna wazan hoga iska? 3.5-4 kilos. So you can just imagine the... So that's my conclusion now. I mean, I just want to... Okay, so then let's watch the film. Bhaiya, you have to move.
फिल्म दिखानी है, so lights off. Dynamic yet subtle, dramatic and lyrical, exuberant yet sublime. The Chau is a major tradition of dance theatre of India. The Hindu calendar month of Chaitra is witness to 13 days of intense rituals and worship. Called Chaitra Parva, it culminates in a 4-day festival of Chau, an offering of dance to the cosmic dancer Shiva. Chau developed a technique as it evolved, a technique that reflected the living culture of the people amidst whom it was nurtured. Chalis, Uflis, Khel all constitute the technique. Chalis and Tokas imitate gaits of birds and animals. Uflis capture the essence of the daily chores of the housewife. Gogorogura, Khorkiba, Guttikula, Guttipinga, Bithau Bata, Jundigia, and Kulabachura. Khel is the play of sword and shields and combat techniques. The culture of Chau dances was nurtured amidst communities that inhabit the tribal tracts of the 3 bordering districts of Saraikela, Purulia and Mayurbhanj, situated in the states of Jharkhand, West Bengal and Orissa. Chau is derived from the word chavni or military camp and traces its moorings to the vigorous martial movements practiced by the soldiers. Even the music they used came from the instruments primarily martial in nature. Legend has it that the king of Singhbhum became its patron in the 13th century AD. The male royals also became performers and choreographers and helped propagate and popularize the art. Masks have defined the way in which the body is used to express emotions and feelings.
masks are a focal point of the Chau technique. It is a major element in Saraikela and Purulia. But even here there are differences and can be seen in the masks of the two Chau forms. Like the dance, the masks also reflect the living culture. Therefore, the Purulia masks developed in the likeness of the images of the goddess that are made in Bengal. Saraikela, on the other hand, was influenced by the painting styles of Orissa. The identity of the dancer is concealed. The character of the mask takes over, and the dancer is transformed. In Mayurbhanj, makeup and costume defines the character. The dynamism of the Chau movements is used effectively to express themes of its compositions. Technique and body combine to express the emotion. The performance space is an open area, traditionally called the akhada. Rhythm is the music of Chau. The rhythmic composition is interpreted through the percussion instruments, the dhol, the dhumsa, and the chachari. The muhuri and shehnai provide the melody. Expansive movements of the body echo the powerful sound drums. The victory of the goddess Durga over the demon Mahishasur in Purulia. The subtle abstraction of night into Ratri, based on the Ratri Sukta from the Rig Veda in Saraikela. The cosmic dance of Shiva, Nataraj, in Mayurbhanj. A living tradition, the legacy of Chau has been handed down from generation to generation. Many from the community are 5th and 6th generation artists. A son learns the craft from his father, and oftentimes the only legacy that is bequeathed is the legacy of art. Engaged in the daily rigors of earning a livelihood, for that must be done through other means, as art does not provide for daily sustenance. It does, however, sustain the spirit, as most artists in the community forget their mundane existence, when, in the evening, they transform into the characters they play. It is for them an effort to preserve a legacy that connects them to their past. So I'd like to conclude and
and thank Swapna ji and Sangeet Natak Academy for this wonderful opportunity to bring out the aspects of Chow which have strengthened me as a human being and have taken me back to a tradition, to the roots of the tradition. And I would urge everybody who partakes of the ritual of Chow, when you watch it, we should see it at its source and nurture that. Thank you very much. We'd like to thank Shagun for that very engaging paper presentation, equally supported with a captivating demonstration by all the artists. मैं निवेदन करती हूँ महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री जेपी डांगे जी से कि वे मंच पर आकर कलाकारों का सम्मान करें, और साथ ही रानी खानम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सुविख्यात कथक कलाकार, गुरु, कोरियोग्राफर। रानी जी, felicitation for Shagun, one of the few women performers of Saraikela Chow in the country, a very acclaimed exponent of Odissi and Chow. Accompanied by Lakshmidhar, Guru Shashidhar Acharya ji, Academy Awardee and Padma Shri Awardee. Dilip ji, Sachin Mahato, Shubham Acharya, we'd like to welcome and thank Dange ji for his presence here. बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का। तो अब समय है भोजन ग्रहण करने का। विल नाउ ब्रेक फॉर लंच। इसके बाद श्री वीवी रमणी जी जो तमिलनाडु से हमारे बीच आए हैं, उनका पेपर प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उससे भी पहले हम प्रस्तुत करेंगे कोरियोग्राफिक फीचर बीजा द सीड। तो ये लंच के बाद। डू जॉइन अस आफ्टर 45 minutes when we resume the concluding session of our 3-day seminar Beeja-the Seed. Thank you. मैं फोन नहीं करूँगा, कल देख